Students will wait for a few more minutes. Let everyone join, and then I'll start. So good evening, students. Now we will start. So before I take the questions, last minute questions, which we also call it as LMR, last minute revision, I would like to emphasize that the subject, that is basically strength of material and structural analysis, together it has weightage of almost, we can say that 8 to 10 marks, which is quite good. We can say 10% almost. The main thing in this particular concept, particular subject, is that you don't have to cram anything. तुमको रटना कुछ नहीं है, cram कुछ नहीं करना. It's all the concept based. ठीक है. With respect to GATE, what strategy you have to follow is the short tricks. ठीक है. हर एक question जो है can be solved. Almost all the question can be solved by two ways. One is the lengthier way, which we generally solve it in BTech examinations. ठीक है. जो हम BTech के exam में solve करते हैं. Another is the short tricks, which actually we have to take the short tricks. Why? The reason is we get very less time. If we are doing the questions in detail, then definitely what will happen? We will end up spending most of the times in solving the problems, and will not be able to tackle up the more questions. ठीक है.
So now basically we can start with the questions. What you can see it on the board over here. Now another thing, wherever you get any doubt, you can put it in the chat box which is in front of me. I'll try to answer. In case I may not see the chat box, which I usually do, means which I'll see it regularly. In case if I miss, probably you can just retype it. I'll try to answer all the questions. Okay, and at the end of the session, also you can ask the questions. You are free to ask the question anytime. So the questions initially I'm going to take the strength of material, then later on the structure analysis, and again it is going to come up as a mixed questions because as such we cannot segregate. That is my funda of taking the subject. As such, we cannot segregate these two conceptually. Okay, so let us start the first question. So the first question over here is which of the following which of the following Mohr circle represents the given 2D stress matrix? Okay. So we know that any 2D stress matrix can be represented in this particular format. There could be a time lag, but I hope that time lag will be there in terms of writing as well as speaking. So I'll take bits slow. Okay. So now we have given the stress matrix. What we have to tell over here that this stress matrix represents which of the Mohr circle. ठीक है वो हमें बताना है. Now basically it is only the diagrammatically representation of the Mohr circle. कुछ value यहाँ पर नहीं दिया है, ना radius दिया है, ना diameter दिया है, ना we don't have anything. We just have to tell diagrammatically क्या होगा यहाँ पे. अच्छा अभी Mohr circle में you must be knowing that कि this is nothing but minor principal sigma 2 and this is nothing but sigma 1. It is valid for all of the basically all of the circles. So this is sigma 2 and here it is sigma 1. Now what we can do first, with this set of the stresses given to us, we will find out what is the sigma 1 and what is sigma 2. So now, here the normal stress in the x direction, sigma x is given as 50 MPa. Sigma y, normal stress in the y direction, it is given as minus 15 MPa. And tau xy, that is the shear stress, that is given as 30 MPa. ठीक है. Now in diagram, if I want to draw this, this is nothing but it is going to look like this way. So here we have tensile. Here again it is sigma x. Sigma y is compressive, so we can say that here we have sigma y as minus 15. Okay, this sigma x is nothing but we have as 50. Then we have the shear stresses. So in shear stress, we have this. So this is nothing but, so we can say that that is 2xy equals to 30 MPa. See, here in detail, I'm just explaining this. You don't need to do such kind of things in the exam. It is going to consume the time. Okay, it is just for your understanding. Now, I have to calculate the principal stresses, sigma 1 and sigma 2, which is nothing but here it is shown on the diagram. So now, sigma 1 slash sigma 2, you must be knowing the formula. Sigma x plus sigma y by 2 plus minus under root sigma x minus sigma y by 2 square of this and then 2xy square. So we can put these values in the formula. So sigma x is plus 50, sigma y is minus 15 divided by 2 plus minus under root 50, then minus minus plus 15 divided by 2 and square of this 2xy is 30 square. So it is going to come as 17.5
plus minus 44.23. So in total, sigma 1 we will get it as 61.73 MPa and sigma 2 as minus 26.73. Okay, this is what we are going to get. I'll just get my calculator. So now, if you look at the diagrams, option A, basically we will eliminate it. The answer over here is nothing but the option A. Now we will see how it is and why. Okay, so answer is option A. Now option B. Option B looks like a circle, the center of which is nothing but exactly at the origin. So this is origin. So here if we say that these two values, that is sigma 2 and sigma 1, looks to be similar with respect to the magnitude, hence which is not possible. Sigma 2 in option C, if we see here, sigma 2 seems to be positive value. Okay, that is greater than 0, but whereas we have negative value over here, so hence option C is not possible. Option D, if we'll see, sigma 1 by magnitude is much smaller than the sigma 2 by magnitude. Sigma 2 is this much value, whereas sigma 1 is this much value. If you see here, what we are getting, sigma 1 is greater than sigma 2. That is what we are getting over here. Okay, so in total, again, we can say that option D is not possible. Hence, we are left with the option A, which is the correct answer for us. So option A is the answer. I hope this is clear. If it is not clear, you can put any doubt in the chat box. So we are done with the question one. The answer is option A. Any doubt, put it in the chat box. Otherwise, we will go further. So there is no question. Now we will go to the question number two. So question number two, what it says, consider the following statements. For elastic material, stress is a function of strain. So what is the basically stress strain relationship for elastic material? It is sigma equals to E into epsilon. Okay, wherein this is stress, this is strain, and this is Young modulus. Okay, now if we see that for elastic material, stress is a function of strain only. So yes, that is true. So statement number one is true. Here we have stress as a function of strain. Now, number two. Number two is for viscoelastic material, stress depends not only on strain, but also on the rate of strain at which the strain is applied. So for viscoelastic material, what is the relation? It is sigma equals to E into epsilon plus eta epsilon. This is the relation wherein eta is nothing but the rate at which the strain is applied. Okay, so hence stress depends not only on the strain, it is depending upon the strain as well as eta also, that is nothing but the rate of strain, and this is also true. So the answer is going to be which of the above statement is correct? Both 1 and 2 is the answer. What are you reading is not visible. Okay.
One second, I'll just see what is the issue. Probably the slides are stuck. One second. Now is it fine? I hope now it is fine. It has moved to question number 2, I guess. Could somebody please confirm the same if it is visible now? Okay. Okay. So now what we will do, I have I have explained the question number 2. If some of you are having any problem in this, you can please ask. This is nothing but a simple conceptual question. So in this, what was the problem? That there were two statements: elastic material. This is the Here is the relation. So stress depends upon the strain. For viscoelastic material, again, this is the relation. Here, stress depends upon the strain as well as the rate of the strain. So hence, both of the statements are correct. Okay. Hence, the answer is going to be C. Now we'll move to the next question number 3. Hmm. So now in question number 3, which of the following statement is true regarding the bending moment diagram as shown for a simply supported beam AB? So basically, here we have a simply supported beam AB. So there is a support on A and there is a support on B. It is a simply supported beam. Now, this is nothing but the bending Venn diagram. So basically, what happens here within this range, I'm explaining this entire BMD, not only with respect to the options. So if we go within AC, it is linear, okay, straight line. So hence there will be no load between A and C. It is just a simple load into distance, and then it is x to the power 1 only, 1 degree equation, so hence it is going linearly. Then again at 10, at this particular point, there will be a load over here, pointed load, UDL, not UDL, basically one single pointed load. Then if we'll go to the point number D, so here the moment is changing from 40 kilonewton to 80 kilonewton value. So means what? There is a moment of 40 kilonewton meter acting over here at D point. Similarly, if we come from E point, at E point, the bending moment is changing from 20 to 60. So hence, again, there is a moment over here, which is nothing but 60 minus 20, 40 kilonewton. Okay. Load, I am not calculating. The reason being it is not asked. So hence, I am not calculating the load over here. So now we will see what will be the answer. Option A says couple of 80 kilonewton meter at D and 60 kilonewton meter at E. No, they are 40 at both of the points. So B is also wrong. It is saying 80 at both. C is also wrong. It is saying 80 and 40. So D, couple of 40 kilonewton meter at D and E point. So answer is D. Okay, now, so question number 3 is done. The answer is going to be D. Now we will move to the problem number 4.
Any doubt in problem number 3, you can put it in the chat box. Now, problem number 4. I'm just waiting this question to appear on the screen. So hence there is a lag of 10 to 15 seconds. Now the question 4 is here. The principle of superposition The principle of superposition states that the total deflection of a structure, so we are talking about the total deflection of a structure under the different set of load is equal to the sum of deflection under each set of load acting separately on the structure if the stresses are within the limit. Basically, what it is saying that uh, let us say if we have a simply supported beam, it could be any structure, need not to be simply supported. So here we have a set load P1, here we have a set of load P2. So what happens by principle of superposition, we can convert that in this particular format. This is P1 and plus this is P2. So this is nothing but the principle of superposition provided the stresses should be within the proportionality limit without buckling. Okay. So here the option is C, that is nothing but the definition or the criteria of the principle of superposition. That principle of superposition is valid only if the stresses are within the proportionality limit without the buckling, not even up to the elastic limit. So basically, if you see the stress strain curve, it comes like this. There is a straight line. Okay, after here it is the proportionality limit. After that, it is elastic. It is not straight over here. A point is up to A point, it is straight line. So that is proportionality. B point is nothing but the elastic limit. Okay, so we are not saying that it will go up to elastic limit. So this principle of superposition is valid only if the stresses are within the proportionality limit and without the buckling. Now, problem number 4. So now problem number 5, basically. I'm just waiting for the screen to get updated. So meanwhile, the question number 5, there is one correction that you can, not correction, some addition is there that you can mention over here. Take permissible yield value equals to 100 MPa and Poisson ratio mu as zero point 0.3. So this is the addition what you have to take it while solving the problem. So now what it is saying that a metal bar is being compressed along axis 1. So there are basically 3 axes. This is axis 1. Here this is axis 2. Here this is axis number 3. So metal bar is being compressed along axis 1. Along the axis 1 it is being compressed between the two rigid wall such that the strain in the third direction is 0 and the stress along the axis 2 is 0. Along axis 2 stress is 0 and the strain in the third direction is 0, that is direction number 3. This process causes an axial stress sigma 1 along axis 1 and no shear stress. Only axial stress is there, no shear stress. If the material failure is governed by von Mises yield criteria, then the apparent yield value of sigma 1 is how many MPa. Okay, that is what we have to find out. And the theory of failure which is being used over here is nothing but the von Mises criteria. Okay, now let us first draw the diagram and understand this. So okay, so now
metal bar is being compressed along axis 1. So if we have this axis as 1, so we will say that sigma 1 is being applied over here. Then rigid walls are here. So here we have rigid walls. Okay. Metal bar is being compressed along axis 1 between two rigid walls such that strain in the third direction is 0. There is no strain in the third direction. So hence, this is nothing but the third direction. And the stresses along axis 2 is 0. So there is no stress into this process causing axial stress sigma 1. Okay, if the material failure is governed by von Mises, so this is going to be sigma 3, wherein we will get the sigma 3 as sigma 3, there will be some value, but epsilon 3 is 0. That is what it is mentioned. Now, what is the von Mises criteria? You must have read the theories of failure. So in that, von Mises is nothing but 1 by 12g sigma 1 minus sigma 2 square plus sigma 2 minus sigma 3 square plus sigma 3 minus sigma 1 square should be less than equals to sigma y by 6g. Now, this is the von Mises criteria. Okay, now this is for the three-dimensional. Now here we have sigma 2 as 0. It is given, it is mentioned that the stress along the axis 2 is 0. So it says that the sigma 2 is 0. So for 2D, so basically for 2D, what is the case? In this particular formula, we can keep it. So this 6G and 12G, this will get cancelled. So we have 2 over here. So this will come as sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2 should be less than equals to sigma y square. Okay. Now this will be treated as a formula for the von Mises criteria, which is nothing but for the 2D. Now this is also given that the strain in the third direction is 0. So this is given as strain in third direction is 0 means what? Epsilon 3 is 0, which will lead to what? Now epsilon 3 is 0. What will be the formula for this, or how we calculate the strain? Strain is nothing but the stress sigma 3 divided by E, then plus mu time, because this is compressive, hence it is minus plus mu times sigma 1 divided by E. Actually, this comes with the minus sign. Okay, this comes with the minus sign, and then minus minus becomes the plus. So hence it is plus mu sigma 1 by E equals to 0. Now from here we can say that this sigma 3 is equals to mu times sigma 1. That is what we got. Now we will put that into this particular, let us call this equation as equation number 1. We will put it in equation 1. So sigma 1 here is compressive, so I'm writing it as minus sigma 1 because it is compressive, plus sigma 3 is also sigma 2 is also compressive, and the magnitude is this sigma 3 square minus sigma 1 and sigma 2. Sigma 1 is nothing but minus sigma 1, and sigma 2 from the formula it is nothing but minus sigma 3 is equals to, at limiting case, it should be equals to what? Sigma y square. Now this will be sigma 1 square plus mu square sigma 1 square, then this will be minus mu times sigma 1 square is equals to sigma y square. So sigma 1 square we can take common, so it will be 1 plus mu square minus mu is equals to sigma y square, will be sigma y square. So now we can say that sigma 1 square is nothing but 1 plus 0.3 square minus 0.3 is equals to sigma y is given as 100.
So 100 square. Now, if we'll calculate this, it will be 1 plus zero point 0.3 square minus zero point 0.3. That comes as 0.79. So it is basically 100 square divided by answer, and then root of this is nothing but 112.508. So from here, sigma 1 we get 112.508 MPa. This is what the answer is. Okay. So what we had to calculate here, von Mises criteria, the apparent value. So the apparent yield value of sigma 1 is 112.51. 112.51 is the answer. You can ask the question if you have any doubt in this. You can put it in the chat. So now let us proceed further. Question number 6. I'm just waiting for the question to come. Yeah, now the question is visible to you guys. Now question number 6. If the column of the size 30 centimeter by 30 centimeter is loaded axially as shown in the figure below, then the total shortening of the column is. Okay, so this is how here we have P1 load, P2 load, P3 load, and then we have to calculate the total shortening of the column, neglecting and take E equals to 2 into 10 raised to power 5. This is Newton, Newton per mm square. This is not N. This is there is a typo, so you can correct this. It is Newton per mm square and neglect the self weight of the column. So let us call the total shortening of the column as delta. So this will be delta. This is A, B, C, and D. Delta of AB plus delta of BC plus delta of CD. So shortening of all three column together, we will three parts together, we will get the shortening of the complete column. Now, for any column, if we have the load applied as P, so the delta deflection is nothing but PL divided by AE. PL by A is nothing but the deflection. Now, delta of AB when we have to calculate, so it will be P1 LAB divided by A. Similarly, at B, delta of BC will be P1 plus P2 because the entire load is going to act. This will be LBC divided by A. Similarly, for CD, it will be P1 plus P2 plus P3. The all three load will be acting, and then LCD divided by E. This is what we are going to get as a total shortening. So now the delta is P1 is what? That is 120 kilonewton 10 raised to power 3. Okay, into PL. L is nothing but 3000 mm. PL divided by area is 30 centimeter by 30 centimeters. So I can say that 300 by 300 mm. 300 by 300. So that is the area. E is nothing but 2 into 10 raised to power 5. So now we will get the answer in mm, whatever delta we are going to get it over here. Plus, similarly, this is P1 plus P2. So 12 plus 24, that is 36. So this we will get it at 360 into 10 raised to power 3 into height is 3 meters. So it will be 3000 mm
divided by 300 into 300 is the area into 2 into 10 raised to power 5 plus this will be 36 plus 24, so that is 60. So basically 600 into 10 raised to power 3 PL length will be 3000 divided by 300 into 300 will be the area, and E is nothing but 2 into 10 raised to power 5. So overall we will get the delta. Once you will solve this, the answer in mm, what you are going to get it as 0.18 mm. I hope the question is clear. If somewhere you are not getting anything, you can please ask. I hope so far how many questions we have solved, six number of questions. I hope it is clear to everyone. Then we will move on to the next problem. Chalo. Now we will move on to the next problem, that is problem number 7. Okay. So problem number 7, this is a very good question. So what I'll do, I'll just give you 1 or 2 minutes. You try to solve this particular problem and put the answer in the chat. I'll give you just 2 minutes. Solve this and put the. There could be two ways for solving this. I'll just tell you the difference between two. One is the incorrect way, another is the correct way. By incorrect way, also, if you are going to link this with the structural analysis problem, you may end up in doing it in incorrect way, but that is also important to know. The reason being, once you do it incorrectly, then only you will come to know what kind of error you are committing over here. So your time starts now. I'll just give you 2 minutes. At 4:40 I'll start it by myself. Anyone? What is the answer? Now, let us look at the problem. Beam ABC shown in the given figure is horizontal. The distance to the point of contraflexion from fixed end A is. So we have to find out what will be the distance to the point of contraflexion. Okay. So what we will do first, we will try to find out. I'll just do it in detail. We'll try to find out where is the point of contraflexion. What is point of contraflexion? That is nothing but where the bending moment is a 0. So now let us say that we have a reaction RA over here. We get a reaction RB over here. Now summation MA is equals to 0. That means moment at taking moment at A point equals to 0. So what will happen? This 5
about point A will produce clockwise movement. So I'll say that 5 into 1. Then RB will produce the anti-clockwise movement RB into 0.75. Then 1 kilonewton meter is nothing but the clockwise movement equals to 0. So from here we can say RB equals to 6 divided by 0.75. So 6 divided by 0.75 is nothing but the 8. So we will get this as 8. Okay, that is RB. Now we know that RA plus RB is nothing but the 5 total downward. So RA is equals to 5 minus RB, that is 5 minus 8. So we have minus 3 like this. So now let us say the point of contraflexure is nothing but at a distance x from A. So now what we'll do, we will say that mx, which is nothing but equals to 0, is equals to Ra into x plus 1 is equals to 0. So Ra into x is what? Ra is minus 3 into x plus 1 equals to 0. So from here, x is nothing but 1 by 3, that is comes as 0.33. Okay, that is one way. So the answer is nothing but 0.33. Now the incorrect way could be, what could be the incorrect way? Now you must have dealt displacement method in structural analysis. What is that? One is the moment distribution method. Okay, MDM. Another is slope deflection method. Okay, there are two methods. Now, in moment distribution method, we distribute the moment. What happens now? If I want to convert this, it will be a fixed here and a hinge over here. This 5 will go down 5 kilonewton meter, and then this we will take it as 5 into 0.25. 5 into 0.25, that is 1.25. So we will say that it is 1.25 over here. Now half of this 1.25, if we'll take it, we will transfer it over here. So what will happen? 1.25 divided by this, that comes as 0.625. So if you are taking this 0.625, basically you are ignoring the already given 1 kilonewton meter over here. Okay. So please, if you are considering this way, so do not forget that this value 1 kilonewton meter is the moment given, which is already given over here. It is not something the distributed moment which has been transferred from the far. Okay. So in this way, please do not consider, if you are going to consider in this way, do not forget to take 1 kilonewton meter. So the answer is 0.33, but somebody has kept it mahfuz. Yes. So that is 0.33. Now, let's go to the next problem. Problem number 8. In problem number 8, basically one correction, small correction is there. Instead of 901 Newton per mm square, this is 90. This is not 901, it is not 901, it is 90. So the question says, what is the inclination of resultant stress? So we have to find out the inclination of the resultant stress with the normal of the plane of maximum shear stress. We know that if it is sigma 1 and sigma 2 alone, means what? These are the principal plane. Okay, major principal and minor principal. So this is nothing but the principal stresses. And then corresponding planes are the principal plane.
So the maximum shear stress occurs at an angle 45 to the principal plane. So from here, if I'll draw, so that is nothing but this is the plane of maximum shear stress. So here, if I take this condition, so what it is saying, what is the inclination of resultant stress with the normal of the plane of maximum shear stress? Normal of plane से कितना है? ठीक है? Maximum shear stress of 20 न्यूटन पर mm square. तो maximum shear stress का वैल्यू दिया है 20 न्यूटन पर mm square and the resultant stress जो दिया है वो 90 न्यूटन पर mm square दिया हुआ है. Resultant stress भी दिया है और maximum stress भी दिया हुआ है. ठीक है? We know that what kind of stress do we get over here? One is sigma 1 plus sigma 2 by 2. That is the normal stress. Okay. So that is sigma 1 plus sigma 2 by 2. Here also it is going to come as sigma 1 plus sigma 2 by 2. Similarly, here also sigma 1 plus sigma 2 by 2. These are the normal stresses. Now we get the shear stress as well because that is the tau max. So tau max is nothing but this way. In tau max, we know sigma 1 minus sigma 2 by 2. This is the value of tau max. Okay. Now, basically the resultant stress, if we want to calculate, so I'll just change the color. So here is the resultant stress which is acting, and then this is nothing but sigma r. So now we will read the question again and then we will link it with the diagram. What is the inclination of resultant stress? So this resultant stress is nothing but sigma r. So इसका inclination पूछा है with the normal of the plane. Normal of plane कौन सा है? ये वाला. ठीक है? Of the plane of maximum shear stress. Maximum shear stress का वैल्यू दिया है 20 and resultant इसका दिया है 90. तो ये वाला वैल्यू उन्होंने पूछा है basically this one. What will be the value of this one? Okay, now इन्होंने resultant stress का वैल्यू कितना दे दिया? Resultant stress sigma r is given as how much? 90 Newton per mm square, and tau maximum का वैल्यू कितना दे दिया? Tau maximum is given as 20 mp. So now there are two ways of solving this. Okay, one is the long procedure which I'll tell you. Those kind of problems also may be asked, but still I'll explain you. यहाँ से अब अगर मुझे phi निकालना है, so what I'll do, I'll see this triangle. ये triangle देखो, ये वाला, let us say A, B and C. ABC triangle में if I take sin phi in ABC triangle, so that will be BC divided by AC. Now that BC is nothing but it is the tau max, the shear stress divided by AC is nothing but the sigma r. So from here it will be sin phi equals to tau max कितना दिया है 20, sigma r कितना दिया है 90. So यहाँ से if we will calculate phi, so it will be sine inverse 20 divided by 90. So it is going to come as 12.8839. So 12.84, or I can say that the phi approximately it is 13 degree.
That is one way. Okay. So now, see, in this type of question, it is not lengthy. It is only you must know what is the, if at all it is a principal stresses case, which will be the maximum shear stress plane, and what do we mean by the resultant of the stress, and how do we calculate this value. For this, at least what I recommend you, you take a stress block like this. ये जो stress block दिया है, ये वाला stress block लो, and then you derive these from the scratch. उसको scratch से calculate करो, sigma r का value कैसे आता है, sigma 1 कैसे आता है, sigma 2 कैसे आता है, and tau maximum कैसे आता है. All these things you need to derive it from the scratch. So now this is one method. Method number two, which is slightly lengthier than this, but sometimes it is useful while solving other type of the problem. So I'll solve it here with method number two. Okay, so this is method one. So method two. Method two, how do we calculate now? It is given sigma 1 minus sigma 2 divided by 2 is equals to 20. So from here, I can say that sigma 1 equals to 40 plus sigma 2. So let us say equation number one. Okay. Now the resultant stress, which is given as 90 sigma r. How do we calculate resultant? You can check it. Summation of fx square plus fy square वहां से निकाल लो. Basically ये जो है तुम्हारे पास यहाँ से summation under root में this square plus tau का square. इन दोनों को calculate करोगे तो you will get it as sigma 1 square plus sigma 2 square divided by 2. ठीक है. अब देखो, विच इज नथिंग बट सिग्मा आर क्या दिया है 90 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2. सो नाउ 90 square 8100 into 2, that is 16200. So it is 16200, 16,200 is equals to sigma 1 square, that is 40 plus sigma 2 square. So this is sigma 1 square plus sigma 2 square. ये मैंने क्या किया, यहाँ से वैल्यू को इसमें पुट अप कर दिया. So now from here, if we will calculate 16200 is equals to 1600 plus sigma 2 square plus 2ab, that is 80 sigma 2 plus sigma 2 square. ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 2 sigma 2 square, और यहाँ से 2 को हम डिवाइड कर देंगे. सो इट विल बी sigma 2 square. Parallelly 80 sigma 2 है, तो 80 का half is 40 sigma 2, and then it is 16,200. 16,200 minus 1600, okay, divide by 2 is 7,300, minus 7,300 is equals to 0. So from here, if you solve it, screen not visible. Now the screen is visible, like there is no problem in the screen. Even I have switched on the live uh, this thing, YouTube. Okay, let me just put it and then I'll check. So the sigma 2 from here, it is nothing but 67.75 or minus 107.75. ठीक है, यहाँ से ये आ गया. और similarly we can calculate sigma 1. So when we calculate sigma 1, it comes as 107.75. So from here, there is standard formula 10 phi is equals to sigma 1 minus sigma 2 divided by sigma 1 plus sigma 2. This is the standard wherein you have seen the principal stresses. So if you solve this, you get it as 12.84 degree. So this is a bit lengthier way, but I would say that this is also recommended to understand. Screen you are writing is not visible. 1 second.
Now is it clear? Now can you see the screen? Okay, so basically, this is the second way or the alternate way of solving the problem. So far, यहाँ तक किसी को problem है कुछ? If all you have any issue, you can tell me. You can write it over here. Screen का issue तो I guess अभी तक गया होगा, ठीक है? We can see. Okay. So I'll just proceed further. So there are two alternate ways of solving this problem number 8. ठीक है? Now we'll proceed further. Question number 9. Question number 9. In an axial tensile test on a 15 diameter bar, so there is a bar of 15 diameter. So this is 15 dia, bar gauge length 200 Okay, so in an axial tensile test on a 15 diameter bar of gauge length 200 15 dia आ गया and 200 gauge length आ गया. The load at the proportional limit is found to be 25 kilonewton. जो लोड का वैल्यू आया that is 25 kilonewton and corresponding change in the length and the diameter r. तो change in length जो मिला है that is delta L is 0.25 and change in dia जो delta D मिला है that is 0.00625 respectively. Poisson ratio and the percentage volume change respectively are. So now Poisson's ratio is nothing but mu is equals to lateral strain upon the longitudinal. ठीक है, lateral direction में कितना strain है and longitudinal direction में कितना strain है, उन दोनों का ratio is nothing but the Poisson's ratio. अभी lateral direction देखो, जब axial testing कर रहे हैं तो this is how we are applying the load. ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा लोड लगा रहे हैं तो इसके लिए lateral direction कौन सा हो जाएगा, डाया, longitudinal along the length. So lateral strain कितना आएगा, accordingly we can say, ठीक है, lateral direction is nothing but डाया वाला side, so that is delta D divided by D, that is the lateral strain. Longitudinal strain is nothing but delta L by L. ठीक है, ये Poisson's ratio हो जाएगा. So यहाँ पर change in dia कितना है, 0.00625 divided by original dia is 15 divided by change in length is 0.25 divided by the total length is nothing but 200. So इसका जब हम ratio निकालेंगे, so it is 0.00625 divided by 15, this whole divided by 0.25 divided by 200. So that comes out to be 0.333, that is 1 by 3, or we can say that 0.333. Okay, so this is the strain. Sorry, not strain, the Poisson's ratio. Now, second thing what we have to calculate, Poisson's ratio, and so from here itself we can say either B or C, इन दोनों में से कोई एक correct होगा, otherwise option A is wrong, option D is wrong. ठीक है, now that's why we have to calculate the second also, because हम दोनों में से एक हमने दो ऑप्शन को डिस्कार्ड किया, but still we have two options in our hand. So यहाँ से हमें परसेंटेज वॉल्यूम चेंज बताना है. So first of all volumetric strain निकालेंगे epsilon v. तो now epsilon v volumetric strain is nothing but तीनों डायरेक्शन का सम epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. ठीक है, ये होगा. अभी देखो, epsilon x is nothing but the longitudinal direction. Longitudinal direction में हम उसको टेंसाइल कर रहे हैं तो बेसिकली इट इज गोइंग टू elongate. ठीक है, वो elongation में जाएगा, so that is nothing but 0.25 change in length divided by तो original length 200. बाकी दोनों साइड कौन सी है, डाया वाले साइड है. डाया वाले साइड में दोनों में सेम ही आएगा,
तो आई कैन से दैट एंड इट इज गोइंग टू कंप्रेस. अब सोचो एक बार है, बार को अगर हम इस तरीके से एलोगेट कर रहे हैं तो दाया वाली साइड क्या होगा, इट विल गेट श्रिंक. ठीक है, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ माइनस साइन. तो माइनस साइन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.00625 डिवाइडेड बाई epsilon y and epsilon z both will be negative and divided by 15 and it is going to be 2 times. So that is nothing but the volumetric string. So now once we calculate this volumetric string, so this is going to be how much? 0.25 divided by 200 minus 2 into 0.00625 divided by 15. So we have 4.167 into 10 raised to power minus 4. Okay, so ये आया अभी हमारे पास volumetric strain, but we have to calculate the percentage volume change. Volume change निकालना है डेल्टा V, ना कि volumetric strain. So we know that epsilon V divided by epsilon V, how do we define? Delta V divided by total V. So the volume change delta V will be epsilon V into V. So epsilon V आया 4.167 into 10 raised to power minus 4 into वॉल्यूम अगर हमें निकालना है इसका तो इट विल बी पाई बाई 4 d स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर इनटू लेंथ. लेंथ इज 200 mm. So this is going to be delta V. So 4.167 into 10 raised to power minus 4 into 0.25 into 5 into 15 square into 200. So we get it as 14.73 mm square. Okay, so this 14.73 mm square is nothing but it is the delta V. But now what we have to okay 14.73. Now what we have to calculate percentage volume change. ओके परसेंटेज वॉल्यूम चेंज निकालना था ना, ये है हमारा डेल्टा वी. टोटल वॉल्यूम चेंज निकाला है हमने डेल्टा वी. सॉरी, सो delta v by v into 100 is nothing but the percentage volume change. So that comes out to be same 4.16. okay, epsilon v. epsilon निकालना था, percentage volume change निकालना है. So this step is not required. यहाँ से delta v. So volume change, calculation of volume change is not required because epsilon v is nothing but the percentage volume change only, delta v by v into 100. Okay, just 100 से we have to multiply. यहाँ पे 100 से हमें multiply करना रहेगा percentage volume change delta v by v into 100. So delta v by v is nothing but epsilon v into 100 और epsilon v ऊपर से हमारे पास है 4.167 into 10 raised to power minus 4 into 100. So that comes as 416.7. 416.7. Zero 416. Sorry, this is the value. I hope यहाँ तक सबको clear है. Now I'll move further. ठीक है, now question number 10. This question number 10 is very good. So now we'll see. In a piece of material, tensile stress F1 and a shearing stress Q act on a plane. एक piece of material है जिसके ऊपर tensile stress काम कर रहा है F1 and a shearing stress Q act on a plane and an additional tensile stress F2 acts on a plane perpendicular to that of F1. देखो क्वेश्चन को लैंग्वेज में बस उन्होंने लैंग्वेज में मॉडिफाई किया. आई जस्ट पुट द चार्ज ऑन माय लैपटॉप. 1 सेकंड.
नाउ सी क्वेश्चन को सिर्फ लैंग्वेज में मॉडिफाई किया गया, अदरवाइज दिस इज वेरी इजी. सो पीस ऑफ मटेरियल लिया जिसमें हमारे पास स्ट्रेस है टेंसाइल स्ट्रेस F1. सो यहाँ पर F1 टेंसाइल स्ट्रेस हुआ एंड द शेयरिंग स्ट्रेस, ये शेयरिंग स्ट्रेस Q हो गया. एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस F2 एक्ट्स ऑन अ प्लेन, एक F2 एक्ट कर रहा है ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ F1. F1 का प्लेन कौन सा है? F1 का प्लेन इज दिस, इसका परपेंडिकुलर प्लेन इज दिस, तो यहाँ पर एक्ट कर रहा है F2, ये F2. सिंपल. द कंडीशन फॉर विच द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, हमें ये बताना है कि प्रिंसिपल जो स्ट्रेसेस आएगा यहाँ से वो अपोजिट नेचर के आए. तो सबसे पहले व्हाट विल बी द कंडीशन की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. सो sigma 1 and 2 is equal to what? F1 that is sigma x plus sigma y divided by 2 plus minus sigma 1 minus sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau square, that is q square. Now if we want sigma 1 and sigma 2 to be of opposite nature के अगर हमें चाहिए है, ये टेंसाइल है, ये F1 टेंसाइल है, F2 टेंसाइल है, so we know that it is going to be positive. ठीक है, F1 plus F2 by 2 is going to be negative, oh sorry positive. तो अब अगर ये हमारे पास नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव में भी कैसा कि इससे, then only it is going to be of opposite nature. So I can say that for opposite nature means what कि एक प्लस और एक माइनस हो, तो under root of F1 minus F2 divided by 2 square plus Q square should be greater than F1 plus F2 by 2. Just read this and then try to understand if it is clear. If it is clear, tell me which option is correct. ठीक है, ये अपोजिट नेचर के कब होंगे? जब ये इससे ज्यादा होगा. नाउ व्हाट वी कैन डू, सिंपली वी कैन सॉल्व दिस एंड वी कैन चेक. ठीक है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी F1 minus F2 whole square divided by 4 plus Q square F1 plus F2 whole square divided by 4. ठीक है, so once you solve it from here, what you will get it as F1 into F2 should be lesser than Q square. That is option B. Clear? The question is clear. Now we will move to the next topic. Question number 11. Screen will take some time. Yeah, now it is updated. So question number 11. Stress strain relation for a material is approximately given by the diagram shown in the figure. So this is the stress strain relationship. ठीक है. Now, elongation of a bar in mm made up of this material of a diameter. Diameter कितना दिया उसका? 50 mm diameter दिया, and the length 2 meter दिया under the axial tension of 300 kilonewton is. ये कितना बता रहा है कि उसका elongation यानी वो कितना खींचा है, डेल्टा एल उसका कितना आएगा? That is what we have to calculate.
हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप दिया है, तो हमें बताना है कितना। सबसे पहले देखो हम एलोकेशन कैसे बता सकते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रेन आ जाए, स्ट्रेन कैसे हमें पता चलेगा। देखो ये डायग्राम क्यों दिया है उसने, डायग्राम में स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन दिया है, ठीक है। अगर हमें एक बार देखो स्ट्रेन पता चले तो क्वेश्चन को जस्ट बैक टू फ्रंट लेकर आओ। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, लोकेशन निकालना है, मतलब डेल्टा एल निकालना है। तो डेल्टा एल विल बी एल इंटू एप्सिलॉन, ठीक है, दैट इज द स्ट्रेन। तो अभी अगर हमारे पास स्ट्रेन आ जाए तो हम उससे लोकेशन निकाल लेंगे। अब बात आती है स्ट्रेन कैसे आएगा। स्ट्रेन हमें इस डायग्राम से मिलेगा, बट इस डायग्राम से कैसे मिलेगा, तो हमें सबसे पहले स्ट्रेस चाहिए होगा, क्योंकि एक साइड में वाई एक्सिस पे स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है। तो अब हम हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें स्ट्रेस कैसे आएगा, ठीक है। That's what we have. Now we know that stress is nothing but sigma equals to P divided by A. So load is given as 300 kilonewton. So 300 into 10 raised to power 3 divided by area is nothing but 5 by 4 diagonal square, that is 50 square. So यहाँ पर ये कितना आ गया, 300 into 10 raised to power 300 into 10 raised to power 3 divided by 0.25 pi into 2500, that is 152.788. So 152.788 है, तो 79 MPa कर देता हूँ, ठीक है। नाउ 152.79, अभी अगर 152.79 देखो तो इट इज गोइंग टू कम समवेयर हियर, यहाँ पे आएगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन निकालना है हमें। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, हमें स्ट्रेन मिलना चाहिए। तो एक बार स्ट्रेन आ गया, उसमें एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट देन लोकेशन। नाउ दिस द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज चेंजिंग। तो हमें कैसे करना पड़ेगा कि पहले इतने स्लोप में तो स्ट्रेन है 0.002। नाउ टोटल स्ट्रेन वी विल कैलकुलेट, epsilon in bar is equals to, तो टोटल epsilon in the bar is equals to 0.002। ये किसके इक्वल आ गया, 120 MPa के प्लस, ठीक है। अब कितना स्ट्रेन है, 0.006, 0.006 माइनस 0.002, ठीक है। ये क्या में डिवाइड हो रहा है, 180 माइनस 120 में, बट हमें चाहिए कितने में है, हमें चाहिए 152 पॉइंट, लीनियर इंटरपोलेशन कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दैट 120, ठीक है। सो यहाँ से एप्सिलॉन इज गोइंग टू कम एज 0.006 minus 0.002 divided by 180 minus 120 is 60 into 1.7 minus 120 ब्रैकेट क्लोज, सो इट इज 2.18, और इसमें प्लस 0.002 ऐड किया तो 4.186, 4.186 into 10 raised to power minus 3, or I can say that 0.004186, ठीक है। इतना एप्सिलॉन आ गया। अभी दिस एप्सिलॉन and we have to calculate the elongation. So and total delta L is equals to epsilon into L. So यहाँ पर 0.004186 में हम 2 मीटर यानी 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं, so into 2000, so we get it as 8.372. So 8.372 mm is the answer, ठीक है। So I hope this is clear. So 8.372, that means D is the answer. Now let us move to the next problem. So far I hope that is clear. Now we'll move to the next. ठीक है, यहाँ तक clear है सबको? Now question number 12. So question number 12. If two pieces of the material A and B same bulk modulus, means what, K same है, KA is equals to KB.
बल्क मॉडुलस उसमें सेम दिया है, ठीक है, सेम बल्क मॉडुलस, बट द वैल्यू ऑफ ई फॉर बी इज 1% ग्रेटर, बी का 1% ग्रेटर देन ए है, तो ई यानी ई ऑफ बी इज 1.01 ऑफ ई, ठीक है, ये उसने दिया. What is the value of G for the material B is in terms of E and G for material A? What is the value of G for the material B in terms of, this is not is, in terms of E and G for the material A? ठीक है, यानी ई ए जी ए के टर्म में हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी फॉर द मटेरियल बी. जी बी का वैल्यू बताना है हमें, ठीक है. हमारे पास कंडीशन क्या दिया है, के ए इक्वल्स टू के बी, तो वो कंडीशन हम लेके चलेंगे. वी नो दैट हमारे पास रिलेशन क्या होता है, एक बेसिक रिलेशन इज E is equals to 9 kg divided by 3k plus g, ठीक है. अब यहाँ से k equals to kb, तो अगर हम यहाँ से k का रिलेशन देखते हैं, so that k relation comes as E into g. देखो बार बार derive करोगे then again you will end up losing the time in the exam, so you have to remember these, ठीक है. तो k is equals to E into g divided by 3 times 3g minus e, ठीक है. ये यहाँ से वैल्यू फॉर्मूला, एज अ फॉर्मूला तुम बोल दो, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेमोराइज दीज फॉर्मूलाज. इनका अंडरस्टैंडिंग आना जरूरी है, यू कैन डिराइव दैट इज ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेमोराइज ऑल्सो. सो नाउ वी नो दैट के इक्वल्स टू के बी, ये हमें पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ई ए जी ए डिवाइडेड बाई 3 into 3 GA minus EA is equals to KB, EB, GB 3 into 3 GB minus EB, ठीक है, जिसमें कि हमें पता है EB इक्वल्स टू 1.01, तो यहाँ पे EB का वैल्यू रख देंगे ये, तो दिस विल बिकम 1.01 EA GB divided by 3 into 3 GB को एज इट इज छोड़ दो, माइनस 1.01 ई, ठीक है, इतना आ गया. अब यहाँ से क्या करते हैं, दिस 3 and 3 इज कैंसल्ड, ये 3 कैंसिल किया, फिर यहाँ से ये एंड ये कैंसिल किया, ठीक है. अब हमारे पास क्या बच गया, 3GA माइनस ई डिवाइडेड बाई जी ए, सो 3 माइनस ई डिवाइडेड बाई जी, 3GA माइनस ई डिवाइडेड बाई जी ए इज इक्वल टू, इसको भी हम ऐसा कर देते हैं, ये 3GB डिवाइडेड बाई 1.01 GB है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, ये GB एंड GB कैंसिल हो जाएगा, तो 3 को मैं 300 कर देता हूँ, एंड दिस इज 401 माइनस 1.01 ये है, तो ये 1.01 से 1.01 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल कम एज ई डिवाइडेड बाई जी, ठीक है. अब यहाँ पे जीबी मेरे को इस साइड मिल जाएगा, सो आई कैन से दैट ए डिवाइडेड बाई जीबी इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाई 101 माइनस 3 GA माइनस ई ए डिवाइडेड बाई जी ए, ठीक है. इसको सॉल्व करके वी विल गेट द रिलेशन फॉर जीबी, and then GB is going to come as, so you can solve it, and it will come as option number
A 101 EAGA. So we will get this. Just you need to solve it further and we will get this. So GB is 101 EAGA divided by 101 EA minus 3GA. Okay, so that is question number 12. So now we'll move to the question number 13. It'll take some 2-3 seconds to update. Yes, now it is updated. Question number 13. Shear force diagram of a simply supported beam of length 4 meter is shown below. So the length is given as 4 meter and this is the shear force diagram. So we have this as SF3. The maximum bending moment in the beam is, so we have to find out what is the maximum bending moment. Let us call this as point number C. Now, we know that the bending moment is going to be maximum where the shear force changes its sign. ठीक है, जहां पर भी shear force अपना sign change करेगा, there the bending moment is going to be maximum. So here the shear force is positive, here shear force is positive, then it is becoming 0, then here it is becoming negative. So at point C, the shear force is changing its sign, hence the bending moment will be maximum. So we can say that maximum bending moment will occur at C, where shear force changes its sign. जहां पर shear force अपना sign change कर रहा है, there it is we are going to get the maximum bending moment. Now bending moment maximum is nothing but the area under shear force diagram between which point, between A and C. ठीक है, ए एंड सी के बीच में जो मैक्सिमम सॉरी ए एंड सी के बीच में जो एरिया होगा, एरिया अंडर कर्व इज नथिंग बट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, नो सॉरी बेंडिंग मोमेंट. नाउ ए एंड सी के बीच में जो कर्व है दैट इज 2 डिग्री का, बेसिकली इट्स अ पैराबोला. सो पैराबोला का एरिया क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द 2/3 ऑफ base is 2.31 and height is 6.67. So ये मीटर में, किलोमीटर में, so we will get the bending moment kilometer meter, that is the maximum value. So 2 into 2.31 into 6.67 divided by 3, we will get 10.2718. 10.2718 kilonewton meter. 10.2718 kilonewton meter is nothing but the total bending moment, maximum bending moment, what we are getting. 10.27. I hope this is clear. Now we will move on to the next problem. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो you can put it in chat. Else we'll move to the next problem. Problem number 14. ठीक है, now solid circular shaft is required to carry a torque of 60 kilonewton meter. तो यहाँ पर torque चाहिए हमें कितना, 60 kilonewton meter का torque and the bending moment of 30 kilonewton meter, 30 kilonewton meter का bending moment. ठीक है, now
the size of the shaft using the Tresca theory. ये theory of failure में means maximum shear stress theory से हमें कितना क्या बताना है, size of the shaft बताना है, ठीक है. तो according to Tresca theory, what we know that toe maximum should be lesser than equals to what, sigma y divided by जो भी हमारे पास factor of safety है divide by 2. This is what, this is nothing but the Tresca theory का condition, ठीक है, या maximum shear stress theory का condition होता है ये, ठीक है. If we read the definition of all the theories of failure, we'll get to know these are nothing but the definitions. So maximum shear stress should be lesser than the maximum shear stress in the uniaxial direction, ठीक है. यूनिएक्सियल डायरेक्शन में जो भी इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आए. सो नाउ व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बोथ टॉर्क एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, टॉर्क एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों से ही सब्जेक्टेड हो, देन इन दैट केस व्हाट विल बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इट इज 16 by pi d cube. It is the circular shaft and the root of m square plus t square is equals to, ठीक है. अब अच्छा, यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए है, वी नीड सिग्मा वाई एफ ओ एस, ये सब चाहिए हमें. अच्छा, 1 second. So basically there is one addition in the question that you can add. These things are given. Take E is equals to 2 into 10 raised to power 5 MPa. This is the part of the question which is not printed. Mu equals to 0.3. Fy equals to 250 MPa and FOS equals to 3. ये दिया हुआ है, ठीक है, इतना सब कुछ दिया हुआ है. Now, so now sigma y is given as, sigma y or Fy is given as 250 divided by Fo is given as 3, this divided by 2. Now we can solve this. तो ये was 16 divided by pi d cube अंडर रूट में m कितना है, 13 किलोन्यूटन मीटर, 13 किलोन्यूटन मीटर 30 है. So this we can say that 30 into न्यूटन mm में कन्वर्ट कर देते हैं. So 10 raised to power 3 into 10 raised to power 3. So we can say 10 raised to power 6, 30 into 10 raised to power 6 and a square of this plus. And similarly this is 60 meters, so it is 60 into 10 raised to power 6 and the square of this is equals to 250 divided by 6, ठीक है. So from here if we solve this we will get the value of D, ठीक है, यहाँ से हमें value of D आ जाएगा. So you can solve this and we'll get the value of D or the dia of the size of the shaft. This is nothing but the Tresca theory. See, this जितने भी theories of failure हैं उनके statement you have to remember, or and one important result is that all the theories of failure gives the same result if there is a uniaxial loading. कहीं पर यूनिएक्सियल लोडिंग है तो जितने भी हमारे पास थ्योरी ऑफ फेलियर है, वो चाहे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हो, प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी हो, ट्रेस्का थ्योरी हो, सेंट वेनिन थ्योरी हो, वॉन माइसेस थ्योरी हो, all such theories gives us the same result in case of the uniaxial loading, ठीक है. So from here the dia D for your answer you will get it as 201.65 mm. This is what you are going to get it as a answer. ठीक है. Now let us move to the next problem, problem number 15. Once the screen is updated, I'll start the question. Okay. Now question number 15, basically solid cube is subjected to the, so we have a solid cube
okay, which is subjected to normal forces on all its faces, equal normal forces. So let us say I'm considering compressive, it could be compressive, tensile, whatever. So let us say everywhere it is sigma. Okay, sigma. The volumetric strain will be how many times the linear strain in any of the three axes. तीनों एक्सेस में जितना लीनियर स्ट्रेन होगा उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना टाइम्स होगा. सो हियर वी नो दैट strain in x direction is equals to strain in y direction is equals to strain in z direction equals to epsilon, and the volumetric strain is equals to epsilon x plus epsilon y plus epsilon z is equals to 3 times epsilon. Now इसने क्या पूछा है, volumetric strain epsilon v divided by epsilon v divided by longitudinal strain epsilon x is nothing but 3 epsilon divided by epsilon, so we have 3. So the answer is going to be 3 times. Okay, I hope this is clear. This is very simple question. Now we'll go to question number 16. Okay, now in a bar of rectangular section, the width tapers from 25 mm to 15 mm. ठीक है, जो width है rectangular bar है. So basically we have this rectangular bar. This is width. This is the cross section. Okay. So width tapers from 25 to 15. So this is 25, and वो यहाँ पर जाकर let us say that is like this. So width tapers from 25 mm to 15 mm while the thickness remains uniform. So this is the thickness 10 mm. This is also the thickness 10 mm. ठीक है, equal to 10 mm. Overall length is 0.5 meters. So this length is 0.5 meter. The bar is subjected to tensile force of P. So bar is subjected to tensile force of P. If the modulus of elasticity E of the bar is 200 GPa, then the magnitude of P 4.2 mm change in the length of the bar. Length of the bar में change कितना आया 0.2 mm. तो magnitude of P पूछा है how many newtons it is going to be. ठीक है, so I hope that you must not have derived this formula, but it is like with the integration you can take the small part of the rectangular bar. ठीक है, small part लिया P, तो यहाँ से जो deflection होता है PL by AE को तुम integrate कर सकते हो. ठीक है, and you will get this formula, next formula which I am going to write it. The derivation is not important. The derivation so far has been asked 3 or maybe 4 times in the IES paper. IES में subjective में पूछा गया है. Otherwise objective में मतलब वैसे derive करने को नहीं आता. But straight forward you can write down the formula for tapered bar subjected to a tensile load of P. ठीक है. So what will be the deflection? So the deflection for a rectangular tapered bar, so delta is equals to PL.
वहां पर ए ई आता था, तो यहाँ पर ई इंटू टी, टी यानी उसका थिकनेस, तो एरिया टी आया B2 minus B1. B2 is this thick, this width into ln B2 by B1. ठीक है, यहाँ पर B2 क्या है, B2 is this, B1 is this, and this is T. ठीक है, and this is 0.5 nothing but L. So now delta is equals to P. डेल्टा कितना दिया है इसने, 2m, 0.2 m. सो 0.2 इज इक्वल्स टू PL. Length is 0.5 meter, 0.5 into 1000 divided by E. E is equals to 200 into 10 raised to power 3. ये MPa में हो जाएगा, ठीक है, into E T. T is 10 mm into B2 minus B1, 25 minus 15. तो यहाँ पर ये है 25 minus 15 and into me. So what I'll do, I'll just take this, I'll put it here. I'll just B2 minus B1, तो 25 minus 15 into ln 25 by 15. ठीक है, so from here we will get the value of P. तो यहाँ से जब हम P को सॉल्व करेंगे, and that too in kilonewton, we'll get it as 15.66 kilonewton as an answer. Is it clear? ये टेपर्ड के लिए बेसिकली वी कैन डेराइव द फॉर्मूला. डेराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल एक रेक्टेंगुलर बार लिया, उसके ऊपर पी लोड मानकर हमने डेल्टा निकाला PL by A फॉर स्मॉलर लेंथ. देन फॉर अ बिगर लेंथ दैट इज नथिंग बट अ वी कैन इंटीग्रेट. स्मॉलर लेंथ के लिए वी कंसीडर दिस dx. dx लेंथ लिया, dx लेंथ में इसको हमने रेक्टेंगुलर माना. ठीक है, ये dx लेंथ में हम इसको रेक्टेंगुलर मानते हैं एंड देन वी अप्लाई लोड P. तो यहाँ से डेल्टा, डेल्टा ऑफ डेल्टा L इज नथिंग बट PL by A, तो दैट L इज नथिंग बट dx. ठीक है, सो दिस इज 15.66. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 17. यहाँ तक सबको क्लियर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच पॉइंट इज लाइकली टू बी द shear center in the symmetrical channel. ठीक है, सिमेट्रिकल चैनल में ये स्टैंडर्ड है कि वो सिमेट्री लाइन पर होगा, तो यहाँ पर सबके सब सिमेट्री लाइन पर हैं, बट इट इज गोइंग टू बी आउटसाइड ऑफ दिस. ठीक है, इनसाइड नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और क्यू पर नहीं आएगा, तो बाकी बचा P. ठीक है, इसके इस साइड में कहीं पर भी आएगा shear center. So the answer is going to be A. Now, question number 18, let the screen get updated. Then I'll start the question number 18. Okay. Now, a 4-meter long beam simply supported at its end. ठीक है, 4 मीटर लॉन्ग है, सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड, कैरीज अ पॉइंट लोड W एट इट्स सेंटर. तो वी हैव अ सिंपली सपोर्टेड बीम, 4 मीटर है एंड सेंटर पे पॉइंट लोड W लग रहा है. इफ द स्लोप एट द एंड ऑफ द बीम इज 1 डिग्री, तो ये कैसा स्लोप होगा, दिस इज गोइंग टू कम लाइक दिस.
ठीक है, तो इसने क्या बोला है, यहाँ पर जो थीटा है वो 1 डिग्री आ रहा है. Then the deflection at the center of the beam. So we have to find out what is this डेल्टा. ये डेल्टा हमें बताना है कि सेंटर पे डिफ्लेक्शन कितना आएगा. ठीक है. नाउ थीटा जो स्लोप है, वी नो दैट slope theta is going to be WL square divided by 16 EI. ठीक है. WL square by 16 EI which is given as 1 degree. So उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. So that comes as pi divided by 180. pi by 180 रेडियन. ठीक है. तो ये हमें दिया हुआ है स्लोप 1 डिग्री. हमसे पूछा है सेंट्रल डिफ्लेक्शन. तो डेल्टा नो दैट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड इट इज इट कम्स एज WL क्यूब बाई 40 EI. ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो तुमने ये ऐसे किए होंगे. कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू UDL, व्हाट इज द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, दिस, एंड सिंपली सपोर्टेड बीम subjected to UDL, simply supported beam, सेंटर पे ये आया, कैंटिलीवर बीम मूवमेंट लगाया. ठीक है. और लॉट ऑफ रिजल्ट्स आर देयर, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. इन सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को कॉन्जुगेट बीम मेथड से सॉल्व करना, इट इज वेरी मच इजी, वेरी 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 मच इजी. इनको उससे सॉल्व करोगे देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट क्विकली. ठीक है. सो नाउ we know that the central deflection is WL cube by 48 EI. So this is going to come as WL. अब मैं क्या करता हूँ, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ. WL स्क्वायर बाई 16 EI. ठीक है. अब यहाँ पर एक L एक्स्ट्रा बचा और यहाँ पर डिवाइड बाई 3 हुआ. ठीक है. तो देन दिस इज नथिंग बट डेल्टा WL क्यूब बाई 48 EI. ठीक. नाउ दिस वैल्यू इज नथिंग बट वी कैन गेट इट फ्रॉम हियर. ये यहाँ पर रख दो. सो वी विल गेट इट एज पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन into L is nothing but 4 meter. So that 4 meter will come as 4 into 1000 divided by 3. So this will come in the mm. So it is 4000 into pi divided by 180 into 3. So that is 23.27 mm. So 23.27, that is C. I hope यहाँ तक क्लियर होगा. ठीक है. So now let us move further. Question number 19. Question number 19. Let it get updated, then I'll move. Now it is updated. So the Euler crippling load for 2 meter long slender steel rod of uniform cross section hinged at both of the ends. इसने Euler crippling load दिया है 2 meter long slender steel. So L is equals to 2 meter long slender cross section hinged at both of the ends. So P crippling load दिया है 1 kilonewton. Euler crippling load for a 1 meter long steel rod of the same cross section fixed at both of the ends will be. तो एक तरफ तो कैसा है, एक तरफ ये हिंज है एंड
2 मीटर दिया है लेंथ, एंड पीसीआर दिया है 2 किलो न्यूटन। दूसरी तरफ उसने बोला है कि फिक्स्ड है, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड है, लेंथ दिया है 1 मीटर, एंड दोनों उसको फिक्स कर दिया, और यहाँ पर पीसीआर उसने पूछा इलेक्ट्रिकल लोड कितना होगा। तो वी नो दैट पी क्रिपलिंग इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, सेम क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शन है, स्टील स्लैंडर स्टील लिया है, तो ई एन आई दोनों का सेम होने वाला है, और पाई को छोड़ दो, तो व्हाट वी कैन से दैट PCR is proportional to 1 by L effective square. तो PCR1 divided by PCR2 is equals to L effective 1 L effective 2 और इसका होल स्क्वायर। PCR1 कितना दिया है हमें, दैट इज गिवन एज 2 किलो न्यूटन। पहले केस में the 2 मीटर लॉन्ग सिलेंडर यूनिफॉर्म रोशन हिंज एट बोथ एंड इज 1 किलो न्यूटन, सॉरी। So this is given as 1 kilonewton. PCR2 हमें निकालना है। L effective 1 is given as it is hinged at both of the end. It is 2 meter. So it is 2 meter and hinged at both of the end. So factor is 1. L effective 2. It is fixed and it is 1 meter. So the factor is 0.5 into 1. So square of this. So from here, PCR 1 by PCR is equals to 0.5, so that is 1 by 2, so 1 by 4, that is 1 by 8. So sorry, 1 by 4 square of this is 16. So PCR 2 is equals to 16. So the cross section of fixed dielectric load for this is 16 kilonewton. So the answer is 16. Okay, so I hope this question is clear. Now we'll move to the next question. Question number 20. Question number 20. Let it get updated, then I'll start. Uniform, now it is updated. Uniform solid circular cantilever beam. Uniform है solid circular cantilever beam of dia D length L. Dia है D length L. Uniform solid circular cantilever beam of dia D length L carries uniformly distributed load W kilonewton per meter over the entire span. So there is a UDL over here. The same beam experiences an extension E under the same total tensile load. The ratio of maximum deflection to elongation. So हमें बताना है कि किस केस में maximum deflection divide by elongation, ratio of maximum deflection. तो यहाँ पे तो हमें maximum deflection निकालना है, और second केस में क्या है, an extension E under the same total tensile load. तो जब यहाँ पर ये L, ये L and this is D, और this total load is acting WL. ठीक है, so now we have to tell delta maximum over here. तो now delta maximum कितना आता है, WL power 4 divided by 8EI. ये ऐसे डिफ्लेक्ट करता है, ये this way, it is going to deflect this way, and this is delta max. So it will be WL power 4 by 8EI. So now WL power 4 divided by 8EI. I will be pi by 64 d to the power 4. So we can say now 8 WL power 4 divided by pi E d to the power 4. ठीक है? Now here, if the extension is E, this is PL by AE. So
PL by A. No, this P is nothing but WL into L divided by A pi by 4 D square into E. So from here, this will be 4 WL square, WL square divided by pi E D square. So now, what we have to find out the ratio of maximum deflection to elongation. So delta maximum divided by E we have to find out. So 8 WL power 4 divided by pi E W D to the power 4 divided by 4 WL square by pi E D square. So from here, how much we will get? This is 2. Pi and pi cancel, E and E cancel. Okay, so 2 is outside, L we are left with there, and then this is D square of this. So the answer is D. This is the answer. Okay. So far, do you have any problem or any doubt over here? You can ask if you have any doubt so far. Now, after this, we will start the structural analysis problem. So, and then after that, it will be combined essay plus SOM. Both we will combine it together. So, few problems first we will see for essay, then we'll combine essay and SOM together. Okay, so far we have seen the problems related with the SOM. ठीक है, अभी अगर किसी को डाउट नहीं है देन वी विल टेक अ ब्रेक राइट नाउ इट इज 5:55 ऑलमोस्ट सो वी विल स्टार्ट अगेन बाय 6:15 ठीक है 6:15 पे स्टार्ट करेंगे आई एम नॉट पॉजिंग इट और आई एम नॉट स्टॉपिंग इट वी विल कम बैक एंड देन वी विल स्टार्ट बाय 6:15 if there is no doubt you may please go and then take a gap of 20 minutes thank you
All are back. So now we'll start with the structural analysis problems. Now, question number one. If the transpose of a stiffness matrix, first few questions around 15 or 20 are from the essay, otherwise rest of the questions are mixed problems. So the first question is, if the transpose of a stiffness matrix for a redundant beam remains same as the stiffness matrix, then the phenomena may be well explained by the help of. So what it is saying that, let us say if we have the stiffness matrix, let us say denoted by K, for example, it is K11, K12, K21, K22. Now, if the transpose of the stiffness matrix for a redundant beam remains same after taking the transpose of this, we get again same K11. Just I'm writing it K11 dash K21 dash K12 dash K22 dash. This is the means what the transpose is equal to the original matrix. Then this is well explained. It is well explained with the help of what? The Maxwell reciprocal theorem. We call this as Maxwell reciprocal theorem. What it says that, I'm just explaining you what is the meaning of what is Maxwell reciprocal theorem. It says that, let us say we have any kind of a structure, whether it is simply supported beam or a cantilever beam or any portal frame, anything. So it says that if we have the load over here and then we are measuring the deflection, load is at C and then we are measuring the deflection at D, the deflection is going to be the same as if we are interchanging both. So basically it is A, B. Now the load is acting at D and the deflection we are measuring at C. So this is nothing but the Maxwell reciprocal theorem, that in this case, the deflections are going to remain same. Okay. Now the question number two, simple supported beam has overhangs on both of the side as shown in the given figure below. So given figure below, the influence line diagram of the shear force at section XX. So basically we have simply supported beam and overhangs are given. So here we have this overhang AB, here we have overhang CD. Okay, then ILD for shear force at XX. So I'll just draw the beam again. Here we have B, this we have C, this is D, this is A, and at this section XX we are interested to draw the ILD for shear force. Okay, now basically there are two ways of drawing the ILD influence line diagram. What are those two ways? Okay, one is by going with the basic method. Another is if you are, one second. Sorry. So what I was telling, that there are two ways of solving the ILD: adding roller support. Adding roller support. So one comment I got it as from Mehfooz, adding the roller support. So basically that's true that we can add the roller support, but what that method is known as, what is that method or the principle? Can anyone mention in the chat what is that method known as? The second way of drawing the ILD, which is very easiest way. It gives us the qualitative diagram of influence line diagram, not the quantitative. That is known as Muller-Breslow principle. Muller Muller-Breslow principle. Okay. So by this way, we get the influence line diagram very quickly, and it is qualitative diagram, not the quantitative one.
So, what we do in this, basically, we remove the restraint wherever ILD is required, whether it is for shear force, bending moment, or you can say slope, deflection, or any stress function. We remove that particular stress function and give the unit displacement in the direction of the stress function. Okay, so for example, here we need the shear force, ILD for shear force. So this is the beam at section X. What we will do, we will provide a roller support, and then shear force is nothing but in this way we will give a unit displacement. Okay, and remember that we are not allowed to touch any other degree of freedom. So if I use the roller support over here like this, I'll move it in this way, and what happens, rest of the degrees of freedom or anywhere else we will not touch anything. And also we know that the ILD for determinate beams remain straight line, and ILD for indeterminate beams basically it doesn't remain straight line. It has got second degree curve or the 3 degree curve depending upon the situation. So here it is a simply supported beam which is nothing but the determinate structure. So hence for determinate it is going to remain as a straight line. So now uh, when we are drawing the ILD, what will happen? The beam has to pass through B, so we cannot touch this support. Beam has to pass through C also, we cannot touch this support. So ultimately, if I join B and C, so B and C को join करेंगे और straight line से we have only this way to join. ठीक है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम उसको इस तरीके से ज्वाइन करें बी एंड सी को. एंड नाउ बीम को वी कैन नॉट ब्रेक, तो डी तक भी स्ट्रेट लाइन से जाएगा एंड यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन से जाएगा. तो हियर इट इज गोइंग टू रिमेन एज स्ट्रेट. नाउ हमारे पास हमें एक ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है, और इस राइट हैंड साइड पे यहाँ पर बीम स्ट्रेट है तो मतलब इसका स्लोप जीरो है. ठीक है, तो राइट हैंड साइड में भी जब ये बीम जाएगा तो स्लोप जीरो ही रहना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए. सो बेसिकली दिस वे वी गेट द ILD. ठीक है, ILD आई ड्रॉ इट हियर. सो बेसिकली ये उसका ILD है, एंड दिस इज नथिंग बट 1 यूनिट. सो द आंसर इज बी. ठीक है, किसी को क्लियर नहीं हुआ है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज दिस इज वेरी सिंपल. Always do the solve the influence line diagram problems with the help of the Muller-Breslow principle. ठीक है, मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल से सॉल्व करना है. Now we'll move on to the next problem, the stiffness coefficient K11 of the bar. ठीक है, हमें stiffness coefficient निकालना है. So first of all, what is stiffness coefficient? We must know. Stiffness coefficient is nothing but it is the force required or generated for a unit displacement. कि how much force is required or how much force is getting generated for a unit displacement. So for example, in this particular problem, here I have stiffness coefficient K11, or basically I can say that this K11 is nothing but it is the force for the unit displacement in the horizontal direction. Okay, so now when I have applied this K11 in the horizontal direction, so definitely this AB, the bar AB will have another force. So I'll say that this is nothing but FAB. Okay, so here it is going to be FAB, and there'll be one reaction, downward reaction R also. This is 60 degree. This one is 60 degree. Now, ठीक है, अब हमें stiffness coefficient निकालना है K11. So we know that if we are defining delta of A in the horizontal direction, delta of A in the horizontal direction, ठीक है, how are we going to define? कि देखो, दो तरीके हैं हमारे पास, या तो पी के एल बाई ए से हम डिफाइन कर दें इसको, यूनिट लोड से हम इसका डिफ्लेक्शन निकाल दें, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि K11 इज नथिंग बट द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा ए एच. ठीक है, इस तरीके से हम कर दें. तो बेसिकली द अल्टीमेट पर्पज रिमेन्स, सिर्फ ये,
ठीक है. सो द अल्टीमेट पर्पस रिमेन्स कि बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा ए एच. ठीक है. नाउ तुमने एक यूनिट लोड मेथड पढ़ा होगा. ठीक है. यूनिट लोड मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, डेल्टा ए एच इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज पी के एल बाई ए. ठीक है. इससे हम वो निकालते हैं. ठीक है. पी के एल बाई ए से. तो नाउ ये P क्या है? P इज नथिंग बट द फोर्स इन द रेस्पेक्टिव बार्स. लेटर से अगर हम 100 बार है हमारे पास, बार मतलब रॉड. So if 100 number of rods are there, axial bars are there, so we will get the force in all 100 and then we will sum them up. ठीक है. एंड K is nothing but because of the unit load. जहाँ जिस डायरेक्शन में हमें ये निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है, उस डायरेक्शन में यूनिट लोड लगा है एंड देन वी विल गेट द forces in the truss members or in the bars. That is nothing but K system of force. Then L and AE we know now. ठीक है. तो our purpose is to calculate the P force, K force and then calculate it. As we have only one member, that is AB, so we will not sum this up. We have only one member. ठीक है. तो अभी हमें P force निकालना है. सबसे पहले P force हम कैसे निकालेंगे, मतलब force in AB member. तो अब force in AB member. Now from here what can I say, that FAB cos 60 degree is equals to K11. Now cos 60 is 1 by 2. तो एफ ए बी इंटू 1/2 इज इक्वल टू K11. तो यहाँ से क्या मिल गया, एफ ए बी इज इक्वल टू 2K11. ठीक है. ये आ गया मेरे पास. नाउ नाउ यहाँ पे अगर हम देखें, डेल्टा ए एच इज इक्वल्स टू, डेल्टा ए एच से क्या मिलेगा हमें, पी फोर्स. पी फोर्स इज व्हाट, पी फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स इन ए बी मेंबर. तो ए बी मेंबर में पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे. एफ ए बी इंटू के. के इज नथिंग बट अगेन ए बी मेंबर में के ए बी इंटू एल ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए. ठीक है. एफ ए बी कितना आ गया, 2K11 इंटू के ए बी कितना है मेरे पास, के ए बी मतलब कि यूनिट लोड लगाया, K11 के प्लेस पे हमने यूनिट लोड लगाया एंड देन हमें कितना फोर्स मिलेगा ए बी के अंदर. अब देखो K11 क्या चीज़ है हमारे पास, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. नाउ इफ यू सी दैट, जब अगर हम K11 लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ए बी में हमें 2K11 मिलता है लोड. ठीक है. तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं 1 लोड लगाऊंगा तो वहां मुझे 2 लोड मिल जाएगा ए बी के अंदर. क्लियर आया ना. ये देखो आई जस्ट पिक अप दिस हाईलाइटर. हाँ, K11 लोड लगाया मैंने यहाँ पे K11. ठीक है. तो ए बी में मुझे 2K11 मिला, यहाँ वाला ये. अब मैं अगर यहाँ पे 1 किलो न्यूटन लोड लगाऊंगा तो ए बी के अंदर मुझे 2 किलो न्यूटन लोड मिल जाएगा. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट राइट इट यहाँ पर 2 इंटू एल ए बी इज नथिंग बट एल डिवाइडेड बाई ए. और डेल्टा ए एच क्या है, बाय डेफिनेशन जब हमने K11 लगाया यहाँ पर, तो बाय डेफिनेशन वो क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज नथिंग बट 1. तो यहाँ से अभी K11 इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाय 4L. ठीक है. तो यहाँ से ए बाई एल और इंटू में 4 आ गया. सो दैट इज अवर आंसर. नहीं 4 नहीं है, 1/4 है, सॉरी. ये 1/4 है, दैट इज 0.25. ठीक है. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. किसी को कुछ डाउट हो देन यू कैन प्लीज मेंशन दैट, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड एज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. Now let us move to question number 4. Which of the following methods, one second, let the screen get updated, then I'll solve this. Which of the following methods of the structure analysis displacement method? ठीक है. So basically there are two methods.
force method, flexibility and compatibility. ठीक है. Then another method, this is first method, this is second, displacement method or stiffness method. All these names are same, displacement, stiffness or equilibrium method. ठीक है. All these methods names are same. Basically force method is also known as flexibility method, also known as compatibility method, and displacement method is also known as equilibrium method. Now, is nothing but force in which force are unknown or force of flexibility. Quorum analogy is also force method or flexibility method. Moment distribution method is displacement method. And so the answer is, which of the following
Not audible. Okay, so I'm sorry, I forgot to unmute this. Uh, what I'll do, I'll just repeat the question. Okay, so the question number fourth, I have explained. What I have explained, I'll just move it fast forward. Basically, there are two methods in structure analysis. FFC, one is this thing, FFC method. Okay, another is DSC. FFC stands for force method, flexibility method, compatibility method. So all these three methods are same. Okay, either we can call this as force method, or we can call this as flexibility method, or we can call this as compatibility method. Okay, anything you call, this is going to be the same. Secondly, we have displacement method or the stiffness method or the equilibrium method. Okay, so these methods are same. So here, three moment method is nothing but it is a force method. Column analogy is a force method. Moment distribution is a displacement method. So the correct answer is option number B. Okay, now we will move to the next question number fifth. So the question number fifth, what do we have to calculate here? For the portal frame shown in the figure, the ratio of fixed end moment MBA to the MCD due to the sway. So in this particular question, let us say there is a sway of delta here. So here we have a sway of delta. So there is a sway of delta over here. So what will happen when we are giving a delta sway? So we need to calculate the moment, fixed end moment. Okay. So here the fixed end moment will be MBA. The standard formula, or not even the formula, fixed end moment does nothing but the 3 delta by L square when the far end is hinged. Okay. So here 3 is nothing but 3 So 3 delta remains delta, and then L square is nothing but 3L. So this is 3L square. So finally we get it as EI delta by L square. MCD is when the far end is fixed. Here the far end is fixed. So this will become 6 EI delta by L square. So 6 EI delta by L square, and this is for CD. So now 6 EI is 2I delta by L square is 2L square. So this will become 12 EI, and this is 4. So this will become 3 EI delta by L square. Now we have to calculate MBA is to MCD. That will come as EI delta by L square divided by this 1 by 3. So the answer is 0.33. This is the answer, or 1 by 3. I hope it is clear so far. Okay, now we will move to the next problem. Question number 6. Question number 6. Now, this question is interesting. Why? Because there are multiple ways of solving this. Let the screen get updated, then I'll start this. Yes. Now, basically, this particular problem can be solved by many ways. It is, first of all, it is indeterminate. Indeterminate structure. Okay. So now, how we will do it? By detailed method, what we can do, I can just tell you that you can use any of the method for the indeterminate structure. Okay.
it can be solved by multiple ways, unit load method, or let us say this can be solved by moment distribution method or slope deflection method. Okay, multiple ways, three moment method, multiple ways it can be solved. But now we will see a short trick which you can use it in the exam. Now we will just split this beam into two. We have to find out the moment at A. We don't have to analyze it completely. किसी ने पूछा नहीं है इसका BMD कैसा करना, BMD कैसे ड्रॉ करना है और ये सब किसी, nobody has asked. So we will just find out what is required to be done. So if we are splitting it into two part, और AC का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, B पे सपोर्ट है और ये C पॉइंट है. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज 8 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज C पॉइंट. ठीक है. और फिर CD का अभी हम एक ये बनाएंगे. नाउ सी, एट C पॉइंट, this is C, this is D. At C point there is a upward force which after splitting it up we are getting it, and at C point here in right hand side we'll get this. Once we combine this we will get the main beam what is given in the question. Okay, so ऐसे ही हमने इसको split किया है. Now we will just add the UDL what is given over here. So this is given that 20 kilonewton per meter का ये हमें लोड दिया हुआ है. ठीक है, ये हमारा क्या है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है जिसमें कि हमने AC पोर्शन एंड CD पोर्शन को स्प्लिट किया है. आई होप यहाँ तक ये क्लियर होगा. नाउ वी विल सी राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 20 किलोमीटर मीटर का. नाउ सॉरी, ठीक है. नाउ वी विल गेट दिस रिएक्शन एज हाउ मच, दिस इज 4 मीटर, ये 4 मीटर है, तो यहाँ का रिएक्शन आ जाएगा 20 इंटू 4/2, दैट इज 40 किलो न्यूटन. ठीक है, सिमिलरली ये भी 40 किलो न्यूटन आ जाएगा. जब 40 किलो न्यूटन यहाँ पे अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे 40 किलो न्यूटन को डाउनवर्ड एक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, 40 किलो न्यूटन को डाउनवर्ड एक्ट करना पड़ेगा. नाउ फर्दर व्हाट वी कैन डू, only left side wala we can further basically solve this or simplify this. This is A, here we have B. ठीक है, और ये जो 40 किलो न्यूटन का जो लोड है, 40 किलो न्यूटन वी कैन ट्रांसफर इट एज इट इज 40 किलो न्यूटन इनटू, और ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा यहाँ पे 40 इंटू 4 का, दैट विल बी 160 किलो न्यूटन. ठीक है, 160 किलो न्यूटन मीटर. नाउ दिस 160 किलो न्यूटन मीटर will be carry over. There will be a carry over movement. Carry over movement will be half of this in the same direction, so it will be 160 by 2, that is 80 kilonewton meter carry over movement. ठीक है, so we can give the answer as 80 kilonewton meter clockwise. So now you must have observed over here that we don't have to solve it in detail, और ये भी मैंने इनको simplify किया in basically I have written it in order to explain it. Otherwise it is a single line question that once you see that it is 40 into 4, that is 160 का half, that is 80 kilonewton meter in the same direction, so clockwise. Actually don't have to write anything, you just get the महफूज ने आंसर दिया है 80 एंटी क्लॉकवाइज. बेसिकली सी, तुमने ये देखा होगा कैरी ओवर मूवमेंट का कॉन्सेप्ट. ठीक है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कैरी ओवर मूवमेंट का कॉन्सेप्ट देखा होगा. सो देयर व्हाट हैपेंस, लेट अस से इफ आई हैव द फिक्स्ड बीम और यहाँ पर ये एक हिंज है, यहाँ पर मैंने अगर मूवमेंट लगाया, ठीक है, सो द कैरी ओवर गोज इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, कैरी ओवर सेम डायरेक्शन में जाता है, इसका हाफ. लेट अस से इफ यू हैव डाउट ओवर हियर, then we can instead of taking it from there, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि यू आर सो फार बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम, अभी तक तुम्हारे सारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, इट इज ओनली एज अ रिविजन. ठीक है, बट अगर लेटर से तुमको कहीं पर डाउट है, सो व्हाट वी कैन डू बेसिकली, ये तो याद रखोगे देन इट इज वेल एंड गुड कि जो कैरी ओवर मूवमेंट है इट इज गोइंग टू कम इन द सेम डायरेक्शन. बट अगर याद नहीं है हाउ टू सॉल्व इट, वो मैं तुमको बता देता हूँ. ठीक है,
So what I'll do, I'll just take ये question तो as it is उसको रखता हूँ. I'll just explain it here कि अगर मेरे पास, ठीक है, मान लो मेरे पास ये एक बीम आया, फिक्स्ड है, और यहाँ पर ये हिंज है, और यहाँ पर मैंने एम लगाया है, ठीक है. और जब यहाँ पर एम मेरा मोमेंट है, तो फॉर एग्जाम्पल लेटर से यहाँ पर जो रिएक्शन डेवलप हुआ है, मैंने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मान लिया एम ए, जो कि मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर कितना होगा, बट मैंने यहाँ माना कि ये एम ए है, ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन कि आई कैलकुलेट द, देखो अब यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा कि मेरे को लेटर से यहाँ पर एक रिएक्शन आर आएगा, ठीक है, क्योंकि इनडिटर्मिनेट है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द प्रोसीजर, ठीक है. ये इनडिटर्मिनेट है, यहाँ पे अगर ये आर रिएक्शन आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट दिस रिएक्शन आर, ठीक है. वो आर रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे तुम? आर रिएक्शन ऐसे कैलकुलेट करोगे, यू विल स्प्लिट इट इनटू टू, ये कैंटिलीवर बीम और यहाँ पे एक मोमेंट, प्लस ये कैंटिलीवर बीम और यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड, ठीक है. अब इस मोमेंट की वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, ये एम बाई ई आई और एम एल बाई ई आई और एम एल स्क्वायर बाई टू ई आई, ठीक है. यहाँ पर ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई टू ई आई का डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड, और आर की वजह से आ जाएगा आर एल क्यूब बाई, बेसिकली इट विल बी टू थ्री ई आई, ठीक है, पी एल क्यूब बाई थ्री आई. सो ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर. जब तुम्हारे पास आर का वैल्यू आ गया, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द मोमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए के अबाउट, ठीक है. यहाँ से समेशन एम में इक्वल्स टू जीरो कर दो. देन यू हैव वन अननोन ओनली, दैट इज एम ए. एम में निकालोगे, यू विल गेट द आंसर नाउ माइनस एम बाई टू, माइनस एम बाई टू. सो फ्रॉम देयर यू विल कम टू नो कि अगर तुम्हारा आंसर माइनस में आया है, तो ये एंटी क्लॉक नहीं, ये क्लॉक आएगा, ठीक है. तो देन इट विल बी क्लियर टू यू. आई होप महफूज दैट इट इज क्लियर. अगर नहीं क्लियर है, देन स्टिल आई ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर, बट रिवीजन सेशन में ठीक है, दिस मच इफ एट ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग, इट इज गुड इनफ फॉर यू टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स that you have probably completed it in the class. और अभी भी अगर still if you have doubt, still I'll explain you, but it is going to again consume the time. So Mahfouz, can you please confirm if you have got it or not? देखो, this is the way to recall, to remember that carry or moment is always acting in the same direction, ठीक है, same direction में, and the carry over factor is half if it is fixed end. Now इसको solve कैसे करना है, derive कैसे करना है, that is in the right hand side की जो मैंने तुमको derive करके दिखाया है, ठीक है. So the answer is 80 kilometer meter clockwise, not anti-clockwise. Okay. So that is clear. Now we will move on to the seventh number. Question number 7. In the portal frame ABCD as shown in the figure, member AB is rigid. In portal frame ABCD as shown in the figure, member AB is rigid. The possible side sway of the portal frame. ठीक है. अब देखो इसके अंदर क्या आएगा बेसिकली. नाउ दिस ए बी मेंबर इफ इट इज कंप्लीटली रिजिड, कंप्लीटली एक ऐसा है, ये बेसिकली काइंड ऑफ यू कैन से वॉल टाइप, कि ये पीछे मेरे वॉल है. इफ आई अप्लाई एनी ऑफ द लोड, ठीक है, कुछ भी लोड लगाता हूँ, इट इज नॉट गोइंग टू बेंड द काइंड ऑफ लोड विच आई एम अप्लाइंग. तो मेरे लिए ये रिजिड का काम करेगा. यही बुलडोजर आया, उसके लिए इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ रिजिड. उसके लिए इट इज नथिंग, द काइंड ऑफ पावर द बुलडोजर इज अप्लाइंग, तो ये ब्रेक होके चला जाएगा, ठीक है, फेलियर हो जाएगा. तो फॉर मी हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन रिजिड इज नथिंग बट विच इज नॉट गोइंग टू बेंड. तो अभी ये यहाँ पर अगर इसने रिजिड बोला है, सो मीन्स व्हाट, द काइंड ऑफ पावर वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस और द काइंड ऑफ लोड वी आर गोइंग टू अप्लाई, वो ये बेंड नहीं होगा. अब ये बेंड नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी नो स्वे, ठीक है. सो द आंसर इज सी, नो स्वे. Now we'll move on to the question number 8.
ठीक है, let us, the screen is updated now. Yeah, so now we'll start question number 8. Propped cantilever beam AB shown in the figure. ठीक है, ये propped cantilever beam है, स्लोप हमसे पूछा है बी एंड पे। तो इसको हम कैसे करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। इसमें दो मेथड से, मेथड वन मेथड टू, दोनों मेथड। मेथड वन यू मस्ट हैव डन इट लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। सबसे पहले हम इसको लेटर से मेथड वन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेथड वन में मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाऊंगा, सुपर पोजिशन। तो ये कैंटिलीवर बीम और यहाँ पर यूडीएल प्लस कैंटिलीवर बीम और यहाँ पर रिएक्शन आर। ठीक है, तो बेसिकली डेड एंड पे वी नो दैट डेल्टा बी इज गोइंग टू बी जीरो। डेल्टा बी जीरो होगा, या जितना हम ये बोल सकते हैं जितना ये नीचे जाएगा, ठीक है, बीम डिफ्लेक्ट होगा, उतना ही डिफ्लेक्शन ऊपर की साइड यहाँ पर आ जाएगा, सो दैट ये दोनों बराबर हो। एट द एंड ऑफ द डे डेल्टा बी इज गोइंग टू बी जीरो। सो नाउ simply support cantilever beam subjected to UDL, what will be the deflection? The deflection is going to be WL to the power 4 divided by 8 EI is equal to, or cantilever beam subjected to concentrated load at the free end, it is going to be RL cube by 3 EI. So यहाँ से जो R आएगा, R is going to be 3 by 8 WL। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें थीटा बी निकालना है यहाँ से। तो थीटा बी हम कैसे निकालेंगे? थीटा बी इज इक्वल टू, पहले यूडीएल की वजह से हम निकाल लेते हैं, या रिएक्शन की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से निकाल लेते हैं। चलो पहले रिएक्शन की वजह से अगर मैं निकालूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी आर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 EI, एंड इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज आएगा, माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 EI, ये क्लॉकवाइज आएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, आर का वैल्यू डालेंगे 3/8 WL। ठीक है, फिर ये इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 EI आ जाएगा, माइनस WL क्यूब बाई 6 EI। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, ये हो गया 3/16 WL क्यूब बाई EI, 3/16 WL क्यूब बाई EI minus WL क्यूब बाई 6 EI. So if I'll solve it, 3/16 minus 1/6. So I'll get it as 1/48. So this is WL cube by 48 EI, and this is going to be anti-clockwise. ठीक है, तो what is the answer? WL cube by 48 EI, and it is going to be anti-clockwise। ठीक है, ये तो था मेथड नंबर वन। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। देन आई जस्ट मूव टू द मेथड नंबर टू, कि इसको हम मेथड टू से हम कैसे कर सकते हैं। जो हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ा है, ठीक है, वी विल सॉल्व इट बाय दैट पर्टिकुलर मेथड। ठीक है, सो नाउ मेथड टू, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, अब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट MBA, मोमेंट इन BA डायरेक्शन। So MBA is equals to MBA bar. Bar is nothing but fixed end moment plus 2 EI by L. This is the slope deflection equation, plus 2 theta B plus theta A minus 3 delta by L. ठीक है, MBA बार एज देर इज अ लोड, UDL है। ठीक है, UDL है, UDL पे फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना आता है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज इज नथिंग बट WL स्क्वायर बाई 12। एंटी क्लॉकवाइज हम माइनस साइन के साथ लेते हैं, ये WL स्क्वायर बाई 12। ठीक है, और ये हम प्लस साइन के साथ लेते हैं, तो सेम वी विल पुट इट हियर WL स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड एंड मोमेंट।
plus 2 EI by L. L is same, EI यहाँ पे हो गया 2 थीटा बी. थीटा ए जीरो है, देर इज नो सपोर्ट सेटलमेंट, ये भी जीरो है, इनको यहाँ छोड़ देते हैं. और एम बी ए इज गोइंग टू बी जीरो क्योंकि वो हिंज है यहाँ पर. ठीक है, तो फ्रॉम हियर आई कैन से डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 प्लस 4 ई आई थीटा बी डिवाइडेड बाई एल. तो यहाँ से मुझे चाहिए क्या था, थीटा बी चाहिए है, तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12. और ये L यहाँ चला गया and then 4 EI will come down. So this will become minus WL cube by 48 EI theta B, minus indicate that it is in the anti-clockwise direction. So the answer is D. So whichever way you want to use, whichever method you want to use, you can use that. Either slope deflection method, that is pretty much simpler, easy, provided you must remember all the fixed end moment. देखो जितना भी अभी तक तुमने questions देखे होंगे सोम और एसए में, so what I would tell you that you must remember all the standard results. Standard results के अंदर क्या क्या आएगा, जितने भी standard slope and deflections हैं, slope ठीक है, there are almost 15 number of cases, 15 to 20 नंबर ऑफ केसेस जिनमें तुमको स्टैंडर्ड स्लोप याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन याद रखना पड़ेगा. एंड देन देर आर अराउंड 10 to 15 नंबर ऑफ केसेस जहाँ पर तुमको फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स याद रखने होंगे, एफईएम्स याद रखने होंगे. ठीक है, वंस यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, सो ऑटोमेटिकली तुम्हारे हाफ ऑफ द क्वेश्चन इन एसए एंड सोम विल बी like solved very quickly. Half of the questions very easily and quickly you can solve. ठीक है, और दूसरा सोम एंड एसए में गेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यू कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. दैट इज अ वेरी पावरफुल मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. उनसे तुम्हारा टाइमिंग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इट विल कम डाउन ड्रास्टिकली. ये बहुत पावरफुल है. ठीक है, उसके बाद वेन एवर यू गेट स्टक एनीवेयर फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में, यू बेटर यू टेक 1 hour. ठीक है, 1 hour लो अपने पास एंड देन within that 1 hour you solve all the standard results, all the standard cases with the कैंटिलीवर बीम मेथड. कैंटिलीवर बीम से करोगे ना, देन कॉन्जुगेट बीम मेथड से तुम करोगे, इट इज गोइंग टू बी प्रिटी मच इजी. बहुत इजी है कॉन्जुगेट बीम मेथड. एंड देन इट विल बी लाइक यू विल बी एबल टू रिकॉल वेरी क्विकली. अभी कुछ भी, लेट अस से इवन सम टाइम आई डू फॉरगेट, आई एम नॉट सेइंग दैट आई नेवर फॉरगेट. लेट अस से अभी एक मोमेंट का ही था, मेरे को याद नहीं आ रहा था. टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी यहाँ पर किया है, कहाँ पर एक मोमेंट लगाया था. ठीक है, हाँ ये वाला. ठीक है, ये मोमेंट यहाँ पर लगाया था, देन आई कुड नॉट कलेक्ट इट. तो कैसे था, मेरे को पता है यहाँ पर मोमेंट लगाया एम, इसका एम बाई आई डायग्राम कैसे बनेगा, इट इज गोइंग टू बी गोइंग टू लुक लाइक दिस. सो दिस इज गोइंग टू बी एम बाई ई आई. ठीक है, अब फ्री एंड को फिक्स्ड कर दिया और फ्री को ये कर दिया. ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर डिफ्लेक्शन चाहिए था, देन आई नो दैट इट इज नथिंग बट द बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस. सो ये कितना हो जाएगा यहाँ का बेंडिंग मोमेंट, टोटल लोड इज एम एल बाई ई आई और एल बाई 2 पे एक्ट करेगा. सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी एम एल स्क्वायर बाई 2 ई आई. ठीक है, तो वही मैंने माइंड में करके एंड देन आई हैव रिटन इट ओवर हियर. हार्डली टुक 2 to 3 सेकंड. ठीक है, 2 to 3 सेकंड इसने लिया. लेट अस से इवन इफ यू फॉरगेट, देन यू डोंट नीड टू एक्चुअली वरी अगर तुमको कॉन्जुगेट बीम मेथड आता है. ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर. तो ये एडवाइस जरूर यूज करना, दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, स्टैंडर्ड केसेस. So now question number 9. Let the screen get updated, then I'll start. Question number 9. Question number 9 is also very important and a unique case in this you are going to see. ठीक है,
जो कि रेयर, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि तुमने इससे पहले कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा, ऐसा यू मस्ट हैव डन इट, बट एक ये यूनिक केस है जो कि जनरली बुक्स में नहीं होता है. सो नाउ वी विल सी. In the frame shown below, the moment developed at the guided roller support C is alpha times m. Then alpha. ठीक है, तो अल्फा भी हमें बताना है कैसे निकालें. सबसे पहले देखो, यहाँ जॉइंट पे मोमेंट लगा है m. अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर हमें पता हो, देन अकॉर्डिंगली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट. हम अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. बट यहाँ पे जॉइंट पे अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, तो बेसिकली हम कैसे करते थे. इफ़ यू रिकॉल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जॉइंट हम लिखते हैं. ठीक है, जॉइंट पे फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेंबर लिखते हैं, कौन कौन से मेंबर अटैच हैं, बी ए एंड बी सी. फिर उनका स्टिफनेस निकालते हैं यहाँ पे. फिर टोटल स्टिफनेस निकालते हैं. फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं. ठीक है, तो वंस वी नो द distribution factor, then accordingly we can solve it. Now the problem over here is, what is the distribution factor or what is the stiffness when the far end is hinge, we know, far end is roller, we far end is fixed, then also we know. But when the far end is guided roller, what is the stiffness that we have to check. Okay, now I'll just tell you the special case first. Key when the far end is guided roller. Guided roller. So what will happen here? I have hinge. Here I have guided roller. यहाँ पर मोमेंट लगाया है. ठीक है. Now it is same as that I have the fixed over here and a hinge over here and there is a moment m. एंड तो यहाँ पर जो ये होगा, फार एंड इज फिक्स, तो यहाँ का स्टिफनेस कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू 4EI/L. ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पर ये, एंड देन यहाँ पर हमारे पास अगेन इट इज हिंज एंड देन आई हैव अप्लाइड अ डाउनवर्ड लोड आर. मतलब एक रिएक्शन जो कि हमारे पास यहाँ होती है वो मैंने यहाँ पर लगा दी डाउनवर्ड. ठीक है, तो ये क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया 3EI/L, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. नाउ इफ आई कंबाइन दीज टू, तो के इफेक्टिव जो मेरा होगा दैट इज 4EI/L क्लॉकवाइज माइनस 3EI/L एंटी क्लॉकवाइज. सो आई गेट इट एज EI/L. दैट इज वन वे. ठीक है, ये EI/L जो आया है स्टिफनेस, दैट इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग इट. अनदर वे, ठीक है, ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मैंने निकाला है. अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग कुड बी, ठीक है, I'll just, because of the less space, what I'll do, I'll just take this over here from the diagram. Now let us say M is acting in this direction and then here I have this M naught. Okay. Now there is no support over here and here let us say it is RA. So summation Fy equals to 0. I know that RA is going to be 0. Now summation MB, ये B हुआ, summation MB equals to 0. So from here I'll get M minus M naught is equals to 0. So basically this M naught is nothing but M. ठीक है. सो एक हमारा जो कैरी ओवर मोमेंट गया वो m गया, बट इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो माइनस में है. ठीक है, माइनस में है, ये हमारा m नॉट यहाँ पर चला गया. अब हमें क्या करना है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए हमें एक स्टिफनेस चाहिए होगा. ठीक है, दैट स्टिफनेस वी विल कैलकुलेट. स्टिफनेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली वहाँ पे रोटेशन निकालना पड़ेगा एंड देन दैट मोमेंट डिवाइड बाय थीटा वी विल गेट इट एज द. ठीक है, सो नाउ इसका एम डायग्राम कैसा होगा, एम डायग्राम इज गोइंग टू लुक लाइक सिंपल स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगल. तो ये हो गया M/EI डायग्राम, M/EI डायग्राम. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, थीटा ए
theta A is nothing but it is going to be area, that is m by ei into l. ठीक है, सो यहाँ से m by theta is nothing but ei by l. ठीक है, यहाँ से ये ei by l आ गया. तो नाउ यू डू इट बाय बोथ ऑफ द मेथड, दोनों मेथड से हमने किया, देन द स्टिफनेस कम्स आउट टू बी ei by l. That is the main thing that you have to remember. So now you must be having three cases. Number one, when the far end is fixed, it is 4ei by l. Number two, when the far end is hinged, it is 3i by l. Number three, when the far end is guided roller, then it is going to be ei by l. यही तीन केसेस हैं तुम्हारे पास, स्टैंडर्ड केसेस जो तुमको याद रखने. नाउ we will see joint B पे BA. BA is 3ei by L. So 3ei by L is 3. So I can say that it is ei. BC is ei by L. So it is ei by L is 1 meter. So I can say that it is ei. So total K is 2ei. Distribution factor is ei divided by 2ei. So I can say that it is 0.5. Here also it is 0.5. Distribution factor 0.5 आ गए हमारे पास. ठीक है, तो this will be distributed 0.5. So in the frame shown below, movement developed at the guided roller support is alpha times this. Now what will happen कि जो यहाँ पर movement है, ठीक है, तो वो हाफ यहाँ पर चला गया 0.5 m और हाफ यहाँ पर चला गया 0.5 m. और सेम जो मोमेंट है, सेम मोमेंट, क्योंकि अभी हमने देखा कैरी ओवर इज सेम मोमेंट बट इट इज विद द अपोजिट डायरेक्शन. सो हियर इट विल बी जनरेटेड एज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज 0.5 m. सो आंसर हमें क्या देना था, अल्फा इंटू m. सो अल्फा कम्स आउट टू बी 0.5. सो दैट इज द आंसर. अब बताओ यहाँ तक किसी को कुछ इशू है तो, there is any problem then let me know, if not then we will proceed further. ठीक है, now let us proceed further. Question number 10. Question 10 में क्या करना है, for the frame shown in the figure K11, element of first row and first column of the stiffness matrix. ठीक है, स्टिफनेस मैट्रिक्स का हमें फर्स्ट एलिमेंट बताना है जिसमें हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को मार्क करके दिया है इसमें. ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टिफनेस मैट्रिक्स का लेट द स्क्रीन गेट अपडेटेड देन आई विल सॉल्व. हाँ, नाउ बेसिकली स्टिफनेस मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना होता है, स्टिफनेस इज नथिंग बट for a unit displacement how much force is required or how much force is getting generated. It could be force, reaction, it could be moment, any of the thing could be. ठीक है, now let us proceed. So now what will happen कि सबसे पहला स्टेप होता है हमारा सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम को लॉक करो एंड देन गिव द यूनिट डिस्प्लेसमेंट ओनली इन द डायरेक्शन रिक्वायर्ड. अभी हमें K11 चाहिए है, तो 11 के लिए हम सिर्फ वन डायरेक्शन के डिग्री ऑफ फ्रीडम को मतलब रिलीज करेंगे, बाकी सबको लॉक करेंगे. तो नाउ वी हैव दिस, सब लॉक कर दिया हमने यहाँ पर. ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू गिव अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो ये यहाँ पर आ गया हमारा यूनिट डिस्प्लेसमेंट, वे वन के डायरेक्शन में देना यूनिट डिस्प्लेसमेंट. सो नाउ दिस इज नथिंग बट डेल्टा इक्वल्स टू 1. सो सिमिलरली ये भी यहाँ पर चला गया. नाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. ठीक है, ये ऐसा हो गया. अभी हमें K11 देखना है. K11 के लिए अब क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इफ आई सी इन ए बी, ठीक है, इफ आई सी इन द केस ऑफ ए बी, तो इट इज गोइंग टू बी ए ई बाई एल. तो K11 is equals to K11 is equals to ए ई बाई एल फॉर विच केस, फॉर दिस हॉरिजॉन्टल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे जब हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया तो फोर्स कितना होगा यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए, दैट इज ए ई बाई एल. If you must recall, delta comes as PL by AE.
ठीक है, हमें क्या चाहिए, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर स्टिफनेस इज इक्वल्स टू पी बाई डेल्टा, तो यहाँ से आ गया ए बाई एल। ठीक है, ये ऐसे हम स्टिफनेस निकालते हैं। नाउ विल गो हियर K11 A बाई एल प्लस। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में बीम रोटेट किया, जो वर्टिकल कॉलम रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, hence the moment will be generated in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगा कितना, 6 EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर। तो 6 EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर, 6 EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा का वैल्यू कितना है, डेल्टा का वैल्यू है 1, मोमेंट रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज 1। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिएक्शन बी प्रोड्यूस इन सच अ वे दैट इट प्रोड्यूस द क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये रिएक्शन आ जाएंगे हमारे कितने, 6 EI प्लस 6 EI 12 EI, सो दिस इज गोइंग टू बी 12 EI बाय एल क्यूब। ठीक है, तो same this 12 EI by L cube in this direction, we will put it over here 12 EI by L cube. So this is nothing but K11. So the answer is B. I hope this is clear. Now we'll move to the next problem if it is clear. अभी तक कुछ doubt है, you may ask, else I'll proceed further. Now next question is question number 11, and this is also pretty good problem. The kind of trick we will apply over here, it is good. Otherwise, it is an indeterminate structure, but we will see how we are going to solve this. Let this get updated, the page. Yes, now we'll move. A beam AB is clamped in the wall as shown in the figure. Beam AB को clamp किया है wall में as shown in the figure below for the given loading. The bending moment at the mid span of the beam. मिड स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट, बेसिकली मिड स्पैन पे हमें बेंडिंग मोमेंट बताना है। ठीक है, नाउ इफ यू रिकॉल, ठीक है, अगर हम मान लो हमारे पास कोई भी सिमेट्रिक बीम है, जैसे अगर ये हमने सिमेट्रिक बीम लिया सब्जेक्टेड टू यूडीएल, तो क्या होता है जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, डिफ्लेक्शन डायग्राम, तो क्या होता है मिड पे स्लोप जीरो आता है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक ऐसा भी बीम ले लें, यहाँ पर भी सेम लेटर से 100 और यहाँ पर भी 100, सेम डिस्टेंस सिमेट्रिक हो, इफ इट इज सिमेट्रिक अबाउट सेंटर, देन ऑल्सो वी विल सी दैट ये हमारा जो होगा सेंटर पे स्लोप जीरो आएगा। ठीक है, द स्लोप एट द सेंटर इज गोइंग टू बी जीरो इफ इट इज सिमेट्रिक। द सेम एडवांटेज वी आर गोइंग टू टेक इट ओवर हियर, वही एडवांटेज हम यहाँ पर लेंगे। अदरवाइज ये क्या रहेगा, ये इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा इट इज गोइंग टू बी लेंदियर, बट वी विल टेक दैट एडवांटेज ओवर हियर। अब वो एडवांटेज लेने के लिए वी कैन जस्ट राइट डाउन वन लाइन, because of symmetry, slope at center is equal to 0. So we can say that theta at theta midpoint pe it is going to be 0. So now what I can do, I can take this cantilever up to midpoint only. यहाँ पर यूडीएल लगाया 100 किलो न्यूटन पर मीटर का 4 मीटर पे, और यहाँ पर भी 4 मीटर तक लिया, सिर्फ ये ए लिया है, एंड लेट अस से दिस इज सी पॉइंट। ठीक है, ये सी पॉइंट लिया है, और यहाँ पर मैंने ये मिड है, और यहाँ पर लेट अस से ये मोमेंट एम सी लगा दिया जो कि हमें निकालना है। ठीक है, सो वी कैन से दैट बेंडिंग मोमेंट एट मिड, एम मिड इज नथिंग बट एम सी। ठीक है,
अब हमें पता है थीटा एट सी इज 0, तो हम थीटा सी निकालेंगे। थीटा एट सी इज 0 है तो थीटा सी निकाल देते हैं, ठीक है। अब थीटा सी निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए सबसे पहले यूडीएल की वजह से निकालते हैं थीटा कितना होगा। यूडीएल कैंटिलीवर बीम पे अगर लगा होता है उसकी वजह से थीटा कितना आता है, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6 EI। सो वी विल पुट दैट डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6 EI, and this W is nothing but 100 is equal to, ठीक है, मोमेंट की वजह से कितना आता है, स्लोप इट इज ml/EI, so it is mcl is 8 by EI. So from here this EI and EI will get cancelled, so it is 100 into 64 divided by 6 into 8 is equals to mhc. Okay, then this is going to be 8, this is going to be 3, this is going to be 4. So mc is equals to 4 by 3 into 100. So that is going to come as 133.33 kilonewton meter. Now, if the short trick is not understood to you, the same thing you can do for a fixed beam. ठीक है, दोनों साइड से फिक्स्ड लो और सब्जेक्टेड टू यूडीएल, जिसका तुम्हारे पास कंप्लीट बेसिकली बीएमडी तुमको पता रहेगा, इसका स्लोप पता रहेगा, स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन पता रहेगा. Just to check with this particular short trick, you can use that short trick over here and then you will be able to solve it easily. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? कुछ डाउट है, पुट इट इन द चैट, और इफ इट इज क्लियर दैट आल्सो यू पुट इट, एटलीस्ट एक्नॉलेज इट सो दैट आई विल अंडरस्टैंड यस इट इज बीइंग, एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. If you have any doubt, please put it in the chat, or if it is clear that also you mention that it is clear, then I'll proceed further. Okay, now let us proceed further. Question number 12. Question number 12. Flexibility matrix for the beam shown in the figure is so and so. Flexibility matrix दिया है, ठीक है. हमें क्या निकालना है? If the support B settles by delta by EI unit, what is the reaction at B? हमें B पे रिएक्शन बताना है, और जबकि ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स दिया है इसने हमें, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स दिया है और हमें बताना है रिएक्शन. नाउ वी नो दैट F equals to K into delta, ये हमें पता है, wherein F is nothing but the reaction, or I can say that reaction matrix is equals to K matrix into delta matrix, or I can say that it is flexibility matrix inverse into delta, or this is our reaction. ठीक है, रिएक्शन या अननोन जो भी है हमारे पास. तो नाउ रिएक्शन मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है हमारे पास, आर बी पे रिएक्शन निकालना है हमें एंड आर सी पे रिएक्शन निकालना है, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है. एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स विच इज गिवन, ठीक है. तो अगर इसका इनवर्स निकालता हूँ मैं, सो इट इज गोइंग टू बी 9EI, क्योंकि 1/9EI है तो इसका इनवर्स हो गया 9EI, एंड बाकी का इनवर्स. तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, पहले 24 3 जा 72 minus 36, so 72 minus 36, so 1/36, ठीक है. इनके डायगोनल एलिमेंट चेंज कर दो, प्रिंसिपल डायगोनल का 24 एंड दिस इज 3, दिस इज -6 एंड -6,
दिस इज द इनवर्स ऑफ अ 2 by 2 मैट्रिक्स। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक होता है 2 by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का, कि अगर ये ए बी सी एंड डी है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/डिटरमिनेंट दैट इज ए डी माइनस बी सी, और डी को यहाँ कर दो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर दो, ये माइनस सी माइनस बी। ये 2 by 2 मैट्रिक्स का शॉर्ट ट्रिक है इनवर्स का। ठीक है, तो इनवर्स आ गया इनटू डेल्टा। अब ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा टोटल माइनस डेल्टा गिवन। सो दिस डेल्टा इज इक्वल टू टोटल माइनस बिकॉज ऑफ द लोकल। सो if the support B settles down by delta by EI, ठीक है, तो ये कितने से सेटल कर रहा है, माइनस डेल्टा बाई ई आई, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, माइनस डेल्टा बाई ई आई। ठीक है, और यहाँ पर ये जीरो, उसमें सी में कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी हमारा ये नथिंग एल्स। नाउ हियर this is 4, so ei by 4, now what will happen, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, so this is going to be -24 डेल्टा बाई ई आई, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस, दिस इज गोइंग टू बी 6 डेल्टा बाई ई आई। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी 6 डेल्टा, ये माइनस का 6 डेल्टा हुआ, and this is going to be, if I multiply this 6 by 4, 6 by 4, that is 1.5, and then 1.5 delta, that is RB and this is RC। तो उसने पूछा क्या है हमसे, ये पूछा है कि what is the reaction at B, so B का reaction is 6 delta, so that is D, 6 delta। ठीक है, यहाँ तक कुछ इशू, देन यू मे आस्क। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। Question number 13. The propped end of the cantilever beam of a span 12 settles down by amount delta, the rotation of the propped end. The propped end of the cantilever beam of the span 2L. The span is given as 2L. Propped end of the cantilever beam span 2L settles down by amount delta, the rotation of the propped end. ठीक है, so this is the propped cantilever A, B, and the span is given as 2L. This is the span. Now, so basically now, if I see over here, I can write it as, this is the cantilever beam and then there is a reaction R. The length is 2L. Now, if there is a delta deflection over here, I can say that this delta is equals to R L cube by 3 EI. So I can say that 8 R L cube by 3 EI is nothing but this delta. ठीक है, similarly if I calculate theta, this theta comes as R L square by 2 EI. So this will come as 4R L square by 2 EI. ठीक है, 4R. Now what I'll do, I'll multiply by
2, I'll divide it by 2, so that becomes 8. I'll multiply by L, I'll divide by L, so now it will become 8RL cube. I'll divide by 3, multiply by 3. Now I'll do, I'll take this 8RL cube, 8RL cube divided by this 3 EI, and rest all this 3 by 4L. I'll put it here. So this 8RL cube by 3 I is nothing but delta 3 by 4L. ठीक है. So this is theta. So now this theta is nothing but 3 delta by 4L is the answer. So that we will get it over here. ठीक है. That is answer number A. Now other way around is you can do this similar. एक हमने ऐसा प्रॉब्लम किया था सिंपली सपोर्टेड पे. ठीक है. इससे पहले एक हम प्रॉब्लम कर चुके हैं ऐसा. सो सेम वे हियर ऑल्सो यू कैन अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखोगे. ठीक है. कि एम बी ए इक्वल्स टू एम बी ए बार प्लस 2 EI डिवाइड बाई L 2 थीटा बी प्लस थीटा आई माइनस 3 डेल्टा बाई L. If you will solve it, you will get this answer. ठीक है. वहां से तुमको थीटा भी मिल जाएगा बिकॉज थीटा ए इज 0, एम बी ए बार यहाँ पर कोई लोड नहीं है, एम बी ए बार इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0. ठीक है. वो यहाँ पर रखोगे देन यू विल गेट योर आंसर. ठीक है. इट इज प्रेटी मच इजी एंड नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. आंसर आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है. Question number 14. What is the vertical deflection delta of the rigid block weight W? This is the rigid block which is given. This rigid block is given with the weight W. Now we have to find out what is the vertical deflection delta of the rigid block. ठीक है. इसका deflection क्या रहेगा? Now let us say that there is a deflection delta. क्योंकि ये rigid है. ठीक है. सो डेल्टा ही ऊपर वाले का डिफ्लेक्शन होगा. इसका रिजिड है वो. सो सेम वे डेल्टा उसका डिफ्लेक्शन होगा. सेम वे डेल्टा इसका डिफ्लेक्शन होगा. ठीक है. दोनों केस में डेल्टा डिफ्लेक्शन आएगा. अब अगर डेल्टा डिफ्लेक्शन नीचे जा रहा है देन हाउ मच मोमेंट इज गोइंग टू गेट प्रोड्यूस दैट वी नो 6 EI डेल्टा बाई L स्क्वायर. तो ये क्लॉकवाइज घुमा तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 6 EI डेल्टा बाई L स्क्वायर है एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. तो उस वजह से यहाँ पर रिएक्शन कितना आ जाएगा 12 EI डेल्टा बाई L क्यूब. यहाँ पर भी आ जाएगा 12 EI डेल्टा बाई L क्यूब. ये टोटल रिएक्शन आ गया. Now this total reaction has to be equal to the downward weight W. So we can say that this 12 EI delta by L cube plus 12 EI delta by L cube should be equals to W. अच्छा. एक केस ये नीचे 2 EI है. So this is 12 EI delta by L cube. This is 12 EI. So यहाँ पर ये 2 मिस हो गया. ठीक है. तो ये 24 हो जाएगा. So this will become 24. ठीक है. So this is W. So that is 36 EI delta by L cube. बाकी सब सेम है is equals to W. तो यहाँ से हमें क्या बताना है vertical deflection. So this delta is equals to W L cube by 36 EI. ठीक है. सो द आंसर इज बी. ठीक है. अच्छा. बस इसमें एक जो मोस्ट ऑफ द टाइम गलती होने की चांसेस रहते हैं दैट ऑल्सो आई एम टेलिंग यू व्हाट हैपेंस
कि हमने यहाँ पर लोड, लेट अस से हमने यहाँ पर लोड कंसीडर कर लिया कि ये P1 लोड ले रहा है, ठीक है, एंड देन दिस इज टेकिंग एज द डाउनवर्ड इज W माइनस पी, ये W माइनस पी लोड ले रहा है. बट व्हाट विल हैपन कि जो हमारा डिफ्लेक्शन जब हम निकालेंगे, दोनों से जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन अमाउंट इज गोइंग टू कम एज सेम. तुमको डिफ्लेक्शन सेम अमाउंट रखना है, ठीक है. डिफ्लेक्शन चेंज नहीं होगा बिकॉज दिस इज द रिजिड, ये रिजिड ब्लॉक है. If the block is rigid, the deflection at both of the end is going to come as delta delta or whatever amount you consider. But at the end of the day, it has to be same. ठीक है. So that is why I have done it in this way rather than कि उसको मैं P1 मानूं फिर इसको W minus P1 मानूं and then again I have to make another equation saying that the deflection in both of the cases are equal. That will be bit lengthier. वो थोड़ा lengthy हो जाएगा. We can solve it but lengthy होगा वहाँ से. Question number 15. Now next. I hope यहाँ तक clear है सबको. ठीक है. 15. For the propped cantilever as shown in the figure, the vertical reaction in kilonewton, the fixed end पे what will be the vertical reaction? Now tell me the answer for this. I'm giving you guys 2 minutes. Tell me what will be the answer for this. You just look at the diagram. You don't have to actually solve also. It is 7:35. I'm giving you 2 minutes. Meanwhile, I'll bring the water. You just take 2 minutes and then tell me what will be the answer for this. So what is the answer? See, if you'll see this particular portion, that is CB, ठीक है. यहाँ पर क्या support है? The only support we have is RB. Now there is no load. If I'll take the moment about this, so I know that RB is going to be 0. When the RB is 0, so automatically we have only RA left. So RA plus RB is equals to 10.
So from here, RA is nothing but 10, RB is 0. Vertical reaction पूछा है, so the answer is D. Simple. ठीक है. Now the next problem, number 16. 16. Symmetrical two-hinged parabolic arch. When subjected to uniformly distributed load, symmetrical है, two-hinge parabolic arch है. When subjected to UDL, uniformly distributed load on the entire horizontal span, is subjected to नॉर्मल थ्रस्ट अलोन. उसके ऊपर ओनली नॉर्मल थ्रस्ट आता है. ठीक है. यू कैन राइट डाउन एज अ नोट ओवर हियर either two hinged or three hinged. It is valid for parabolic. Both will have only normal thrust if subjected to UDL. If it is subjected to UDL, both will carry only the normal thrust. ठीक है. Now next is question number 70. The maximum ordinate of the ILD for bending moment at the fixed support in a cantilever beam will occur at maximum ordinate of the ILD for bending moment at the fixed end in a cantilever beam will occur at. कहाँ पे अगर करेगा? देखो, obviously it is the free end, but still we will see कि कैसे आया ये. देखो, कैंटिलीवर बीम है ये. ठीक है. कैंटिलीवर बीम में हमें बताना है ऑर्डिनेट ऑफ आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स सपोर्ट. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंड ए पे हमें आईएलडी ड्रॉ करना है. किसके लिए? बेंडिंग मोमेंट के लिए. तो बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी क्रिएट करने के लिए अकॉर्डिंग टू मुलर ब्रेसलव प्रिंसिपल वी विल जस्ट रिमूव द रेस्ट्रेन. रेस्ट्रेन इज नथिंग बट दिस फिक्स्ड एंड को हटा के हमने हिंज प्रोवाइड करा दिया एंड देन गिव द यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ रेस्ट्रेन. यहाँ पे रेस्ट्रेन क्या था? मूवमेंट. तो मूवमेंट को हटाया एंड देन वी विल गिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट दैट इज नथिंग बट द रोटेशन. So if we give the rotation, so this theta becomes 1. So this is nothing but the ILD. ठीक है. ये ILD हुआ. अब उसने क्या पूछा है कि maximum ordinate of the ILD in a cantilever beam will occur at. So maximum ordinate is nothing but at free end. फ्री एंड पे अकर करेगा. सो 17 का आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. द फोर्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टार्ट्स विथ. ठीक है. फोर्स मेथड जो है, फोर्स मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मेथड. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होता है और कंपेटिबिलिटी मेथड होता है. ठीक है. सो वी कॉल इट एज कंपेटिबिलिटी. ठीक है. तो अब क्या है हमारे पास? इक्विलिब्रियम फील्ड, कंपेटिबल डिफॉर्मेशन, इक्विलिब्रियम कंपेटिबिलिटी कंडीशन. सो दैट इज वेयर वी एक्चुअली चेक द कंपेटिबिलिटी, एफएफसी कंपेटिबिलिटी. ठीक है. तो हम वो कंपेटिबिलिटी मेथड भी उसको बोलते हैं बिकॉज वी सी द कंपेटिबिलिटी कंडीशंस. सो 18 का आंसर इज डी. Question number 19. 19 में which one of the following statement is correct? The principal superposition is applicable to non-linear behavior of material. That is incorrect. Non-linear of incorrect. Linear elastic behavior of material and for small displacement. That is correct. Linear elastic behavior of material and for large. It is not for the large displacement. Because of this large, it is wrong. ठीक है. और यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस नॉन लीनियर इट इज लॉन्ग, नॉन लीनियर इट इज रॉन्ग. यहाँ पे लार्ज की वजह से भी ये रॉन्ग है. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड होता है एंड लीनियर इलास्टिक के लिए वैलिड होता है. ठीक है. तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. सो फार यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम?
If not, then we will see the next problem number 20. चलें आगे. ठीक है. Just let the screen get updated. We will move further. Question number 20. देखो अभी तक यहाँ तक प्योर स्ट्रक्चरल वाले चल रहे थे. नाउ अगेन इट विल बी सोम प्लस स्ट्रक्चर कंबाइंड मिक्स प्रॉब्लम्स आएंगे. एंड दीज प्रॉब्लम्स आर फ्रॉम द लास्ट 2-3 years ऑफ गेट प्रॉब्लम्स. ठीक है. तो अब देखो फॉर द प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम द स्टेट ऑफ द स्ट्रेस एट अ पॉइंट पी फॉर द प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम. ठीक है. प्लेन स्ट्रेस मतलब जो थर्ड डायरेक्शन में हमारे पास कोई स्ट्रेस नहीं होगा. ठीक है. द प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम द और द थिकनेस इज गोइंग टू बी वेरी मिनिमल इन द थर्ड डायरेक्शन. For the plane stress problem, the state of the stress at a point P is represented by the stress element as shown in the figure below. ये यहाँ पर 80 MPa टेंसाइल है, 20 MPa कंप्रेसिव है एंड देन 25 MPa shear है. By how much angle theta in degrees the stress element should be rotated in order to get the plane of maximum shear stress. मैक्सिमम shear स्ट्रेस लेने के लिए हमें कितने उस पर रोटेट करना पड़ेगा. ठीक है. अब देखो उसको रोटेट करने के लिए हमें पता है प्रिंसिपल प्लेन से वो 45 डिग्री पे मैक्सिमम प्रिंसिपल जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस होता है दैट मेक्स 45 डिग्री फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पे होता है. ठीक है. तो अभी राइट नाउ इट इज नॉट द प्रिंसिपल प्लेन. दिस इज नॉट द प्रिंसिपल प्लेन. फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई कि हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन है उसका डायरेक्शन क्या होगा. ठीक है. तो प्रिंसिपल प्लेन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है कि सॉरी तो फॉर प्रिंसिपल प्लेन इट इज tan of 2 theta. Tan 2 theta is equals to 2 tau xy divided by sigma x minus sigma y. तो अब यहाँ पे सिग्मा एक्स कितना है. सिग्मा एक्स इज 80 MPa नॉर्मल स्ट्रेस. सिग्मा वाई इज minus 20 MPa एंड देन टो एक्स वाई इज 25 MPa. ठीक है. वी विल पुट दैट इट ओवर हियर. So tan 2 theta is equals to 2 into 25, 2 into 25. Then sigma x 80 minus sigma y minus plus 20. So we have 50 divided by 100. ठीक है. So tan inverse 1 by 2 is 26 degree 26 degree 26.56. ठीक है. डिवाइडेड बाई 2 इट इज 13.28. ठीक है. ये तो अभी प्रिंसिपल प्लेन आया है. ये हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन आया है. ठीक है. तो व्हाट विल हैपन प्लस 45 करेंगे तो वी विल गेट इट एज 58 डिग्री. बट देखो दैट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन. कोई भी ऑप्शन में नहीं है. तो व्हाट विल हैपन. ठीक है. इनके बेसिकली व्हाट हैपन्स के साइन पर डिपेंड करता है. ठीक है. कि वो साइन कन्वेंशन क्या ले रहे हैं. सो राइट नाउ वी डोंट हैव इन द ऑप्शन. सो व्हाट विल हैपन. सो वी विल टेक दिस एज माइनस वाला. सो नाउ वी विल कैलकुलेट tan इनवर्स ऑफ -1/2. That comes as minus 26 degree minus 26.56. ठीक है. तो 26.56 अगर हमने किया डिवाइड बाई 2 किया सो वी हैव गॉट -13.28. ठीक है. अगर हमने ये किया -13.28 मिला. नाउ वी कैन ऐड 45 टू दिस. सो वी विल गेट थीटा एज -13.28 plus 45 is equals to 31.771. So third one is the answer. ठीक है. और
या हम कैसे कर सकते हैं, सो 10 इनवर्स 1/2 अगर पॉजिटिव रखना है, सो दिस कम्स एज 26। ठीक है, इसमें से अगर हम 45 माइनस करते हैं तो वी गेट इट एज 31.7, तो वो माइनस वाला आ जाएगा। सो इन एनी ऑफ द वे यू डू, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर 31, चाहे तुम प्लस लेकर करो चाहे माइनस लेकर करो। जस्ट फॉर कन्वीनियंस आई एम सेइंग दैट कि तुम अगर माइनस लेकर करना चाहते हो, बट अगर प्लस लेकर भी करना चाहा, so you will get this answer with the minus angle. But angle, whether it is rotating this way or other way, ultimately it is going to be same for as far as principal stresses are concerned. ठीक है, so answer is C in this case. Now next, so I hope this is clear. Now next problem is 21. Problem number 21. यहाँ तक किसी को डाउट है तो you can ask. Problem number 21. Let this screen get updated, then I'll start. Long uniformly distributed load of 10 kilonewton per meter. We have UDL load of 10 kilonewton per meter and a concentrated load of 60 kilonewton are moving together on the beam ABCD as shown in the figure. The relative position of the two loads are not fixed. Their relative positions are not fixed. Maximum shear force in kilonewton round off to the nearest integer caused at the internal hinge B due to the two loads is. देखो, मैक्सिमम शेयर फोर्स पूछा है कोज्ड एट द इंटरनल हिंज बी, बी पे पूछा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ बी के लिए देखना है, नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अब इट इज अ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, हेंस आईएलडी इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, कहीं पर कर्व नहीं आएगा। बी पे करना है तो बी के लिए हम वहां पे एक रोलर देंगे, वर्टिकल रोलर। ठीक है, मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल से, जिससे कि ये जो पोर्शन है वो 1 वैल्यू मिले। ठीक है, नाउ सी अगेन सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। शेयर फोर्स का आईएलडी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्यों? बिकॉज हमें दोनों साइड के स्लोप को मेंटेन करना रहता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि बीम को, क्योंकि ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है इसलिए स्ट्रेट रहना है बीम को। सी से होके जाएगा बिकॉज यहाँ पर रोलर है, डी से होकर जाएगा बिकॉज यहाँ पर रोलर है। तो सी और डी को अगर हम ज्वाइन करें, सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट कि वो यहाँ से स्ट्रेट जाए। ठीक है, ये स्ट्रेट जाए। अब इसको हम तोड़ नहीं सकते कहीं पे, तो जब ये सी और डी से स्ट्रेट होके जा रहा है तो वो बी तक स्ट्रेट होके जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे इतना स्ट्रेट होके चला गया, ये स्ट्रेट हो गया। उसके बाद बी से हमें 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट देना है, तो हमने इतना 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट दे दिया। उसके बाद ए तक ये वापस ज्वाइन होगा। तो दिस इज हाउ द आईएलडी फॉर shear फोर्स एट बी, ये आईएलडी होगा shear फोर्स का बी पर। ठीक है, नाउ यूडीएल इज ऑफ एनी लेंथ, कॉन्सेंट्रेटेड लोड 60 है। आईएलडी हमें क्लियर हो गया, रिलेटिव पोजीशन भी इनका फिक्स नहीं है, मैक्सिमम shear फोर्स निकालना है। तो व्हाट वी कैन से कि 60 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर एक्ट करे
और यूडीएल पूरा इसमें ऐड करें. Now the shear force will be 16 to 1 plus UDL 10 into area half height into base 2. So the answer is 70 kilonewton. I hope that is clear. Next problem. यहाँ तक क्लियर है, किसी को नहीं क्लियर है, then again you can ask n number of times, whatever time you want to ask, I'll explain you. Now question number 22. Portal frame shown in the figure, note to drawn to the scale. There is one portal frame, has a hinge support at joint P. Joint P पे hinge support है and the roller support at joint R. यहाँ पर hinge है और इधर roller है. Point load of 50 kilonewton is acting at a joint R in the horizontal direction. Flexural rigidity EI of each of the member is this much. Under the applied load, the horizontal displacement in mm round off to one decimal place of the joint R would be. जॉइंट आर पे हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बताना है. व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? ठीक है. नाउ आई एम गिविंग यू 2-3 minutes टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, देन आई टेल यू. इट इज़ अ गुड प्रॉब्लम, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. ठीक है, गेट का इशू प्रॉब्लम है. सो यू ट्राई दिस एंड देन आई विल एक्सप्लेन. सो आई एम जस्ट गिविंग यू 2-3 minutes. Try and then put the answer in the chat box, and then after that I'll solve if you are not able to solve. So right now it is 7:55. By 7:58 I want the answer.
Anyone who could solve the problem? See, the best part to solve this problem is by unit load method or strain energy method. Okay. So first of all, what we'll do, as there is a roller over here, so we will get a reaction also. Let us say the reaction is acting in the downward direction, FR over here. And here also, let us say there is a reaction at P, which is acting in the vertical direction, FP. And here is one particular reaction, F. Now, if I take the moment about P point, okay, so summation MP is equals to 0, P की point के about 0 लेते हैं हम. So we will get this as this 50 anti-clockwise. So I will say minus 50 into 10. So this is anti-clockwise plus FR clockwise into 5 is equals to 0. तो यहाँ से FR हमें कितना मिल गया 100. ठीक है, तो ये आ गया 100 किलो न्यूटन का लोड विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब ये 100 डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो दिस 100 इज गोइंग टू एक्ट अपवर्ड और यहाँ पे दिस इज गोइंग टू एक्ट 50 इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं. तो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट एट आर इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी को हम डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, वी विल डिफरेंशिएट स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू this force F or whatever. ठीक है, let us say I'll call this as F. तो delta of R is nothing but dou U by dou F. ठीक है, if I am considering this horizontal as F, dou U by dou F now is equals to strain energy PQ member का and then QR member का. So I would say that dou U PQ, ठीक है, पी क्यू मेंबर का डिवाइड डो एफ प्लस डो यू ऑफ क्यू आर डिवाइड बाय डो एफ. ठीक है, ये हो जाएगा. नाउ अब स्ट्रेन एनर्जी हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, देखो, फॉर एक्सियल लोड द स्ट्रेन एनर्जी इज डिफरेंट. फॉर this thing bending moment the strain energy is different, so it is integration m square dx by 2ei. You must have seen this. ठीक है, when we differentiate this, so we get it as m dou m by dou f, whatever it is, force dx divided by ei, and then we integrate this. ठीक है, I'm just telling you the method. So this is what we get the deflection when we are differentiating. So now same way we will differentiate this, and then I will utilize this for directly for the displacement. So delta R is equals to integration. So पहले PQ member का किया, PQ member में it will be 0 to 5. PQ member में it will be 0 to 5. ठीक है, और यहाँ से 1 by EI हम बाहर ले लेते हैं. Then it is moment M into dm by df. ठीक है, मोमेंट m कितना होगा, ये 100 इंटू x. ठीक है, 100 इंटू एक्स करेंगे, देन क्योंकि दिस और ठीक है, या 100 इंटू एक्स करो और अदरवाइज
इसको डायरेक्ट वैल्यू ना करके वी आर कंसिडरिंग दिस एफ बिकॉज वी हैव टू इंटीग्रेट, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एफ, ठीक है। तो दिस इज 2f बेसिकली, this is 2f, so with respect to f we will put, ठीक है। तो it is 0 to f, moment is nothing but fr, that is 2f into x into, अब इसको f के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, we will put that distance over here dx, same way में we will do it for qr, so it is going to be now 0 to 10, same way में we will put it over here, then we will differentiate this, ठीक है। इसको differentiate करेंगे, once you differentiate that, तो delta r comes out to be 25 mm, ये 25 mm आता है, just you have to differentiate and then differentiate m with respect to f and then integrate it, that's it, you will get this 25. Concept I have told you, rest all it is simple mathematics. Now question number 23. Plain truss is shown in the figure, not drawn to the scale. Which one of the option, okay, let the screen get updated, still it is not updated, then I'll solve. There is a lag, maybe because of the internet speed or something. Still it is not updated. One second, I'm just disconnecting the screen. I'll reconnect this because it is not updated. One second, there is some problem, I guess. Yeah, now it is fine. I hope now it is visible. Yes. So now question number 23. Plain truss is shown in the figure. Which one of the following option contains
only zero force members in the trust. See, such type of problems are very good. Okay, and frequently these type of questions are being asked. इसमें सिंपल क्या करना है, बेसिकली देर आर टू थंब रूल्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट विच वन कैरीज द जीरो फोर्स. ठीक है, पहला फंडा क्या है कि एनीवेयर इफ थ्री मेंबर मीट्स, मेंबर मीन्स व्हाट, इंक्लूडिंग फोर्सेस आल्सो. तो मेंबर जब भी मैं बोलूंगा ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट उसके अंदर एक मेंबर दो फोर्स हो सकता है, दो मेंबर एक फोर्स हो सकता है, या तीनों, सॉरी, या तीनों फोर्सेस हो सकते हैं. ठीक है, so if I'm saying that three members means again I'm saying that it could be forces also. So at one particular point if three member meets, out of three member two are collinear, then the third will carry the zero force पक्का. ठीक है, तो ये तीन मेंबर हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड देन थर्ड मेंबर ये आया, सो देन द थर्ड मेंबर विल कैरी जीरो फोर्स, ये पक्का है बिकॉज टू मेंबर्स आर कोलिनियर. उसके बाद क्यों, इसका सिंपल अगर फंडा रीजन तुम्हें देखना है तो यहाँ पे समेशन एफ वाई लगा लेना, इसको जीरो करना. जैसी लेटर से ये थीटा है और ये एफ वन है, तो जैसी समेशन एफ वाई लगाओगे, एफ वन साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, कुछ और नहीं है, तो वहाँ से एफ वन जीरो हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली इफ एट वन पर्टिकुलर जॉइंट टू मेंबर मीट्स, ठीक है, विच आर नॉन कोलिनियर, ठीक है, एंड नॉन कंकरेंट, मतलब नॉन कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, then both of them will carry the zero force. Let us say we have this. ठीक है, दो मेंबर हैं, दो मेंबर में एक मेंबर एक फोर्स भी हो सकता है, then both of them will carry the zero force because यहाँ से अगर तुम समेशन एफ वाई लेते हो एंड देन समेशन एफ एक्स लगाते हो, अगेन इट इज गोइंग टू कम एज जीरो. तो ये भी जीरो होगा, ये भी, ये दोनों कॉन्सेप्ट लगाओगे, यू विल गेट ऑल द जीरो मेंबर्स. तो नाउ वी विल स्टार्ट. पहले हम यहाँ पे देखते हैं जी ज्वाइंट पे. जी ज्वाइंट पे ई जी जी आई है, तो यहाँ पे इसके अंदर जीरो आएगा एंड आई विल मार्क दिस एज वन. ठीक है, पहला जीरो मिला. उसके बाद ई एफ एच पे देखता हूँ मैं, थ्री मेंबर मीट्स, जी पे तीन मेंबर मीट हुए थे, दो कोलिनियर थे, थर्ड में जीरो आया. ई एफ एच, एफ ज्वाइंट लिया, तीन मेंबर मीट कर रहे हैं, एक के अंदर ऑलरेडी जीरो आ चुका है, थ्री मेंबर मीट्स, आउट ऑफ ये, ठीक है, वन इज नॉन, टू आर कॉलिनियर, तो ये एफ आई के अंदर जीरो होगा. दैट इज क्लियर. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कहीं पे अगर हमें आंसर मिल सकता है तो. ठीक है, तो अभी तक एफ जी एफ आई, ये तो दो आगे, एफ जी एफ आई दो जगह हैं, एफ जी एफ, देखो एफ जी एफ आई यहाँ पे है, ये सही हो सकता है, एफ जी एफ आई यहाँ पर है, एफ जी इधर है, एफ आई इधर है, एफ जी यहाँ नहीं है, एफ जी यहाँ नहीं है, तो ये दोनों एलिमिनेट कर दिए हमने. ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एस जॉइंट पे. एस जॉइंट पे देखा तो ये भी हमारा जीरो आएगा, थर्ड नंबर. तब आर एस देखो, ठीक है, आर एस हमारा यहाँ पर है, आर एस हमारा यहाँ पर भी है. उसके बाद पी आर आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे, चौथे नंबर पे पी आर. सो द आंसर इज दिस, डी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. Now, next problem. Plane frame shown in the figure, node to the scale, has a linear elastic spring at node H. नोड H पे लीनियर इलास्टिक स्प्रिंग है, कौन कौन से, एक ये है लीनियर इलास्टिक स्प्रिंग, एक ये, जिसमें के एक्स के वाई दिया एंड के थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ किलो न्यूटन मीटर पर रेडियन. ठीक है, इतना यहाँ पर हुआ. नाउ for the externally applied movement of 30 kilonewton meter at node F पे इतना movement लगाया, the rotation observed in the rotational spring at node node H पे क्या हमारा rotation आएगा, that is what we have to calculate. ठीक है, वो हमें calculate करना है.
ठीक है, एक्सटर्नली अप्लाइड 30 किलोमीटर है नोड एफ पे, and then rotation we have to find out how much will be the rotation total. Now there is one particular funda in this. Now if we will distribute this moment, ठीक है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मोमेंट को. Now far end if you see FE, FE, ठीक है, वहां पर कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है हमारे पास. इट इज बेसिकली रोलर. ठीक है, जब ये रोलर है तो डेफिनेटली देयर विल बी नो मूवमेंट रेस्ट्रेन्ड बाय दिस एफई. तो एफई जो मेंबर है दैट कैन नॉट टेक एनी मूवमेंट, वो कोई मूवमेंट नहीं लेगा. सो द एंटायर मूवमेंट विल बी टेकन बाय एफ जी एच मेंबर. वो तो ये मूवमेंट लेगा ही नहीं. ठीक है, तो वी कैन मेंशन दैट नो मूवमेंट will be taken by member FE. FE member कोई मूवमेंट नहीं लेगा. So I can say that MFE equals to 0. MFE 0 होगा. ठीक है. Now next thing is that now if I take FG and GH separately, so now what will happen? FG लिया मैंने, ये F था, ये G था, and then ये G, ये H सेपरेटली मैंने इनको काउंट किया. ठीक है, यहाँ पर कितना लगाया ये 30 किलो न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाया. सो इनको रेस्ट्रेन करने के लिए देयर हैज टू बी वन क्लॉकवाइज. ठीक है, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट आना चाहिए. यहाँ पे क्लॉकवाइज आने के लिए ये ऊपर ये नीचे ऐसे आएगा. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस 3 मीटर. ठीक है, ये यहाँ पे 3 मीटर है. सो आई कैन सी दैट दिस इज गोइंग टू बी 30 by 3, that is 10. This is also 10. ये डाउनवर्ड जा रहा है 10. सो ऑटोमेटिकली दिस विल कम अप 10. ठीक है, और यहाँ पर दिस विल कम डाउन एज अ 10. ये यहाँ पे 10 डाउन में आ जाएगा. ठीक है, इतना हुआ. नाउ when this 10 is coming over here, so at h how much moment we are going to into 3. दिस इज 3 मीटर. ठीक है, सो यहाँ पे ये अभी क्लॉकवाइज आया तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज रेस्ट्रेन होगा. सो दिस इज 30 किलो न्यूटन मीटर. नाउ आई हैव दिस मोमेंट 30 किलो न्यूटन मीटर. ठीक है, अभी क्या है, वी नो दैट मोमेंट इज इक्वल्स टू स्टिफनेस के थीटा इंटू थीटा. जैसे हम क्या करते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू स्टिफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही मोमेंट इज इक्वल्स टू के स्टिफनेस इंटू थीटा. ठीक है, अभी ये हुआ 30 किलो न्यूटन मीटर. के थीटा हमें के थीटा का वैल्यू दिया है क्या, हाँ, के थीटा इज गिवन एज 3 इंटू 10⁵ किलो न्यूटन मीटर. So this is 3 into 10 raised to power 5 kilonewton meter per radian. ठीक है, this is in kilonewton meter, this 30 is also kilonewton meter. So kilonewton meter, this is also kilonewton meter per radian. So now theta whatever we'll get, it will be in radian. ठीक है, so now this theta is equals to 30 by 3 into 10 raised to power 5. Now it is going to come in the radian. So it is 1 into 10 raised to power minus 4 radian. और आंसर किस में देना है हमें, आंसर वी हैव टू पुट इट इन डिग्रीज. ठीक है, तब इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे into 180 divided by pi. So it will come as 0.00573 डिग्री. और ये करेक्ट बताना है इन डिग्री, राउंड ऑफ टू द 3 डेसिमल प्लेस. तो
3 decimal place तक बताना है, so we can give this answer 0.005 sir. ठीक है, I hope this is clear. ये सबको clear होगा. कुछ doubt है, you can ask, otherwise I'll move further. Now let us move to the next question. Prismatic beam PQR of flexural rigidity EI. EI दिया है flexural rigidity is subjected to movement of 180 kN at Q as shown in the figure. Prismatic beam दिया, PQR, flexural rigidity दिया, subjected to, 1 second, screen is not updated. The rotation at Q, हमें rotation बताना है Q पे कितना होगा. ठीक है. Now first of all we will calculate कि K पे total joint stiffness कितना है. K at Q निकालेंगे. Far end दोनों के केस में कितना है, फिक्स्ड है, so it is going to be 4EI by L. So KQ is equals to KQP plus KQR. KQP कितना हो जाएगा, it is going to be 4EI, EI सेम है, by L 5 plus 4EI by 4. 4 by 5, that is 0.8, so it is going to be 1.8 EI. ये KQ का वैल्यू आ गया हमारे पास. ठीक है. Now हमें क्या बताना है, रोटेशन बताना है. तो थीटा Q इज इक्वल्स टू M कितना लगाया हमने Q पे डिवाइडेड बाय KQ, इतना रोटेशन आ जाएगा. अभी M कितना है, 180 किलो न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय K इज 1.8. Okay, now it is 180 divided by 1.8 into 1 into 10 raised to power 4. 1.8, 1 second, I'll just close the door. So now this comes out to be 180 divided by 1.8 into 10 raised to power 4. 0.01 radian. Okay, so the answer is 0.01, and this much of radian it is going to rotate. Another way of solving this could be that we can use basically slope deflection equation. ठीक है, slope deflection equation हम use कर सकते हैं दोनों उस पे, and then same way we can find out. We can say that moment that is M at Q equals to 0. So by that we can say, basically I'm just telling you the way, but calculation you can do it by yourself. Summation MQ equals to 0. So from here MQP plus MQR equals to 0. That is the way you can say it is going to be 0. ठीक है. और हाँ, यहाँ पे 180 का मोमेंट लगा हुआ है, that also we need to add. So that is let us say if everything we are considering anti-clockwise, so we will say that it is 180 plus.
180 plus MQP plus MQR equals to 0. Now 180 plus MQP कितना हो जाएगा? MQP is nothing but MQP बार, ठीक है, और MQP बार हमारा कितना रहेगा? It is going to be 0 because वहाँ पर हमारे पास कोई लोड नहीं है, hence there will be no FEM. I'm just writing that equation. MQP bar plus 2EI by L 2 theta Q plus theta P minus 3 delta by L. Sorry. Okay. So like that, यहाँ से theta P 0 हो जाएगा, then we have 2 theta Q only, there is no delta. Similarly यहाँ पर M QR लिख सकते हैं. So basically there are two ways of solving this. ठीक है. But answer by both of the ways you will get it as how much? It is 0.01 radian, and it is going to be anti-clockwise. Now question number 26. Vertical load of 100 kilonewton X on a hinge. 1 second, let the screen get updated. Still the screen is not updated. Is it updated at your end? Can somebody please confirm if the screen is updated from your end? Still I can see I guess the screen is frozen. Am I audible? Which question number is coming up over there? Okay, not updated. So still it is question number 25th. One second then. Stop share. Share the screen. It will come now. Yeah. So now this is vertical load of 110 kilonewton X on a hinge located at a distance of L by 4 from the roller support Q of the beam of length L. The vertical reaction at the support Q. We have to find out what will be the vertical reaction. Okay, now basically here if you see, we have to find what is the vertical reaction.
So we have P over here, there is a hinge 10 kilonewton, and here let us say we have reaction R. This is 3L by 4, this is L by 4. Now let us say this is PQ and this point is, let's say, A. So now summation MA equals to 0 because it is hinge, and that too from right side. Right side, say. So it will be R into L by 4 is equals to 0. Hence this R is going to be 0. So we will get this as reaction 0. Okay, now next problem. A plate, let the screen come. So now, next question number 27. Plate in the equilibrium is subjected to uniform stresses along its edges. Uniform stress है along its edges with the magnitude sigma xx 30 MPa, sigma yy 50 MPa as shown in the figure. The Young's modulus of the material is 2 into 10 raised to power 11 and the Poisson ratio is this. If sigma zz, मतलब थर्ड डायरेक्शन में टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है, थर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेस इज 0, negligibly small and assumed to be 0, then the strain epsilon zz. ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है. स्ट्रेन एप्सिलॉन zz is equals to sigma zz by e minus mu times sigma xx by e minus mu times sigma yy by e. ठीक है, अब सिग्मा zz तो 0 दिया है हमें ऑलरेडी. तो नाउ व्हाट वी कैन से, म्यू बाई ई कॉमन ले लिया, वी हैव सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई. तो अभी यहाँ से देखो दोनों के दोनों ये टेंसाइल हैं. ठीक है, तो माइनस म्यू इज 0.3, ई इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, और स्ट्रेस देखते हैं, स्ट्रेस इसने एमपीए में दिया है. तो एमपीए में दिया है, ये न्यूटन में दिया है, तो 10 रेज टू पावर 6 से हम डिवाइड कर देंगे. इसको मैं 10 रेज टू पावर 5 कर देता हूँ. ठीक है, 5 कर देता हूँ सो दैट इट विल बी इन एमपीए. तो सिग्मा एक्स एक्स इज 30, सिग्मा वाई इज 50. So this is going to be 30 plus 50. Now we can find out 30 plus 50, 80 into 0.3 divided by 2 10 raised to power 5. So it is 1.2 into 10 raised to power minus 4. So we can say minus 120 into 10 raised to power minus 6. So the option is going to be A. Clear? Now we'll move to next. Next problem. Solid circular beam with the radius of 0.25 meter. There is one solid circular beam with radius 0.25 meter and length 2 meter. ठीक है, solid circular beam दिया है, radius 0.25 meter दिया है, length 2 meter, is subjected to twisting moment of 20 kilonewton meter about the z axis at the free end, which is the only load acting as shown in the figure.
the shear stress component tau xy at the point M in the cross section of the beam at a distance of 1 meter from the fixed end is. From the fixed end, we have to find out the shear stress component over there. And then it is a solid circular beam. ठीक है? Now see, in this particular problem, now in this particular problem, see, solid circular beam, ठीक है? So we have this as a complete solid circular cross section wise. Now, if it is only a twisting moment, ठीक है? We have only twisting moment. So how do we calculate the shear stress? Shear stress tau is equals to, ठीक है? See, basically from shear stress, from where do we get? There are ways to get the shear stresses. So I'll just point out over here, and then you can tell me. See, one is you must have read this formula, tau, SAY bar over I into B. ये shear stress कहाँ से आता है? Can somebody say, is it the same shear stress what we will get over here? Yes or no? No. Okay. Why it is no? Then okay. So I'll call this as 1, this equation 2, this as equation 3. Then from which particular equation we will get the shear stress? 1, 2, or 3? Tell me. Tell me which one is going to be the shear stress formula in this particular case. From 2, I guess. See, 2 is nothing but it is the bending case. Okay, whenever we have the bending, here there is no bending, it is only the twisting. Solid circular shaft with so and so, which is the subjected to a twisting movement. It is twisting movement. Now see, simple, I'll tell you. Now let us say this is the beam or the shaft. If you are rotating it like this way, ठीक है, ये मैंने rotate किया है पूरा ऐसा, ठीक है, it is the rotation जिसको हम pure rotation बोलते हैं. If it is subjected to the pure rotation, then it is going to be the equation number 3, that is T by J equals to tau by R equals to G theta by F. ठीक है, pure rotation के केस में यहाँ से हमारे पास shear stress आता है. ठीक है, तो now if I see in this, tau is equals to क्या हो जाएगा यहाँ पे, T R divided by J. ठीक है, R हमारे पास क्या है,
R is the distance from the center. तो जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है शेयर स्ट्रेस इंक्रीज होगा. वेयर एज अगर हम ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे जहाँ हमारे पास shear फोर्स आता है इक्वेशन नंबर 1 से, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस, ठीक है. जहाँ से हमारे पास shear फोर्स आता है, सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस कि सेंटर पे हमारे पास जीरो होगा एंड देन वी विल गेट द मैक्सिमम shear स्ट्रेस व्हेन वी रीच, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास सेंटर पे जीरो है एंड देन कॉर्नर्स पे मैक्सिमम होगा और इसका वाइस वर्सा हमारे पास यहाँ पर होगा, ठीक है. इक्वेशन 1 में नाउ टो व्हेन वी कैलकुलेट, जब हमारे पास थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यहाँ पर हमें क्या निकालना है देखो. इफ यू सी द पॉइंट एम वेयर इट इज गिवन एट द एज, एज पे इसने हमें एम दिया है, ठीक है. वहां पर हमें निकालना है. सो whenever shear is maximum, so how we will get that tau is nothing but t by j into r, वो हमें यहाँ से मिलेगा. तो t, now t is nothing but how much it is given, where is t, 20 kilonewton meter. So 20 kilonewton meter into 10 raised to power 6, ठीक है. ये न्यूटन एम में हो गया. j का वैल्यू पाई बाई कितना होता है j, j is equals to pi by 64 d to the power 4 plus pi by 64 polar moment of inertia. So it comes as pi by 32 d to the power 4. So it will be pi by 32 d to the power 4 into, this is going to be d by 2. So I can say that this is d cube and this is, instead of 32 it is 16. So this will be 16 by pi d cube into 20 into 10 raised to power 6, ये तो ठीक है. When the shear stress is maximum, otherwise if you are not considering those plane then it is going to be 0. So you can calculate from here what is the value, ठीक है. Now next question, यहाँ तक clear है सबको. Now we will move to the next question. Consider the portal frame. Consider the portal frame shown in the figure and assume the modulus of elasticity E as this. Okay, and the moment of inertia this for all the members of the frame. The rotation in degree up to 1 decimal place at the joint Q would be same way जैसे हमने अभी तक निकाला, ठीक है. Q के लिए लेटर से हमारे पास इसने Q के लिए हम ओवरऑल जॉइंट पे स्टिफनेस निकालेंगे एंड देन फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द रोटेशन. सो नाउ लेट्स सी. सबसे पहले मोमेंट निकालते हैं, ठीक है. मोमेंट एट Q, moment at Q. So moment at Q will be because of two forces. One is 2000 kilonewton. So that is 2000 into 2. It is going to be anti-clockwise. So 2000 into 2 anti-clockwise minus clockwise का 16 into 50 into length का half, that is 1. So here we will get how much, 4000 minus 1650 into 2, so that is 700. So it will be 700 kilonewton meter, ठीक है. ये हमारे पास मोमेंट एट क्यू आ गया. नाउ ठीक है, अब हमारे पास Q से S एंड R की साइड पे स्टिफनेस निकालेंगे. सो K ऑफ जॉइंट Q इज इक्वल टू K ऑफ QS प्लस K ऑफ QR. So K of QS, far end is fixed, so it is going to be 4EI by L. 4EI by L is 4 meter. 4EI by L is 4 meter. So it is going to be 2EI. Sorry.
Now we have to find out the rotation. So theta is equals to m by k. m मोमेंट हमने लगाया कितना, 700 किलो न्यूटन मीटर डिवाइड बाई 2. ई आई का वैल्यू कितना दिया है, ई आई एम पी ए, और दिस इज एम एम, सो दिस इज न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, सो इट विल बी न्यूटन एम एम स्क्वायर. सो आई विल कन्वर्ट दैट फर्स्ट. It is 10 raised to power 6. So now it will be Newton mm. Okay, sorry. तो यहाँ पर ये हो गया 2.5 इंटू 10 raised to power 4, 2.5 इंटू 10 raised to power 4, and 8 into 10 raised to power 8. So if you solve this, it will be 700 into 10 raised to power 6 divided by 2 into 2.5, 10 raised to power 4 into 8, 10 raised to power 8, 1.75 into 10 raised to power minus 5 radian. Okay, now we have to find out that in the degree. So हमें आंसर पूछा है किसमें, in degrees. ठीक है, that is in the radian, into 180 divided by pi, 1.0026 into 10 raised to power minus 3 डिग्री. ठीक है, आई होप मैंने कुछ, दिस इज द वे. कुछ जस्ट यूनिट एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज दैट इज करेक्ट. ठीक है, जस्ट चेक द यूनिट इफ एट ऑल आई हैव नॉट हैव मिस्ड एनी यूनिट समवेयर. बट इतना स्मॉल रोटेशन नहीं आना चाहिए. ठीक है, इतना स्मॉल, 5 मिनट हो गए बस. ठीक है, इतना स्मॉल रोटेशन नहीं आना चाहिए. आई होप समवेयर आई हैव जस्ट मिस्ड यूनिट दैट यू कैन चेक प्रोबेबली 1 डिग्री कुछ इतना आना चाहिए. बट एनीवे यू कैन जस्ट चेक इट. But the procedure is same. Calculation wise, you just check it once. Otherwise, it is all same, because we have done the previous question also in the same way. ठीक है. Now, next. Consider three prismatic beam with the clamp support PQR as shown in the figure. Now what I'll do, there are basically a few more questions. I'll just explain you the concepts. ठीक है, मैं explain concepts explain कर रहा हूँ. Then you can calculate it, you can solve it, because there is less time now. Wherever some new concept is there, I'll tell you if at all some short tricks are there. You can calculate it by yourself. Consider the three prismatic beams with the clamp supports P, Q and R as shown in the figure. ठीक है, ये सब दिया है हमें P, Q and R. Given the modulus of elasticity E दिया है and moment of inertia I दिया है. The correct comparison of the magnitude of the shear force S and the bending moment M developed at the support. ये तो सिंपल है. इसके अंदर उसने ऐसा कुछ नहीं दिया है. सिंपल उसने कंपैरिजन पूछा है हमसे किस किस का, किस शेयर फोर्स का एंड बेंडिंग मोमेंट का. ठीक है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पूछा है. तो नाउ इस केस में अगर मैं सपोर्ट पे शेयर फोर्स निकालूं, पहले वाले केस में कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 80 आ जाएगा. बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, 80 इंटू 8 आ जाएगा. दिस इज हाउ द बेंडिंग मोमेंट इज गोइंग टू कम. शेयर फोर्स एग्जैक्ट उतना. ठीक है, सिमिलरली ये भी कैंटिलीवर है. इस केस में कैंटिलीवर में कितना आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शेयर फोर्स की, सो 20 इंटू 8 विल बी द शेयर फोर्स. एंड देन बेंडिंग मोमेंट की हम बात करें तो 20 इंटू 8 इंटू 4, ये बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस केस में शेयर फोर्स की बात करें, देयर इज नो शेयर फोर्स. बेंडिंग मोमेंट की बात करें, इट इज 640. ठीक है, सो देन यू कैन जस्ट कंपेयर. वो तो बहुत ईजी है. ठीक है, नेक्स्ट टू बीम्स. ये क्या है, टू बीम्स पी क्यू दिया है फिक्स्ड एट पी एंड विद द रोलर सपोर्ट क्यू.
एक P फिक्स दिया है, रोलर सपोर्ट Q दिया है, शोन इन फिगर 1 विच अलाउज द वर्टिकल मूवमेंट। अच्छा, यहाँ पे ये गाइडेड रोलर है जिसपे कि वर्टिकल मूवमेंट अलाउड है, एंड द एक्स जेड विद द हिंज एट वाई। एक्स जेड एक दूसरा बीम दिया है जिसमें हिंज दिया है यहाँ पर, आर शोन इन द फिगर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। द स्पेंस ऑफ पी क्यू एंड एक्स जेड आर, पी क्यू का एल है, एक्स जेड का 2L respectively. Both the beams are under the action of uniformly distributed load and have the same flexible stiffness EI. Let the maximum deflection and the maximum rotation be delta max and theta max respectively in the case of beam PQ and corresponding quantities of exit this respectively. Which one of the following relationship is true? देखो इसके अंदर सिंपल तुमको ये निकालना है किसका, ये बेंडिंग, सॉरी, तुमको डिफ्लेक्शन और थीटा कंपैरिजन करने हैं। स्टैंडर्ड केसेस बना के यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट, अदरवाइज कॉन्जुगेट बीम मेथड से निकाल के यू कैन कैलकुलेट इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, ये भी इजी है क्वेश्चन। देन दिस इज अगेन स्टैंडर्ड आर्च, 2 इंच आर्च है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द आर्च इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये इट इज सब्जेक्टेड टू ओनली एक्सियल थ्रस्ट है। ठीक है, 2 inch parabolic arch of span L, uniformly distributed load. Okay, still it is stuck. Screen is not updated, so I'm just taking a break. Now, figure shows 2 inch parabolic arch of span L subjected to UDL. अभी हमने ऊपर नोट लिखा था कि 2 इंच या 3 इंच पैराबोलिक आर्च हो जिसमें सब्जेक्टेड टू यूडीएल हो, इट इज बेसिकली ओनली द नॉर्मल थ्रस्ट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 0। Horizontal beam ABC is loaded shown in the figure below. The distance of the point of contraflexure will be how much? हाँ देखो, एक ऐसा सिमिलर हमने क्वेश्चन किया था जिसमें यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का लोड दिया था। ठीक है, एनीवे स्क्रीन को अपडेट होने दो, देन आई विल एक्सप्लेन। हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें यहाँ पर 1 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट दिया था, बट इसमें यहाँ पर नहीं दिया। तो नाउ यू कैन यूज दिस ट्रिक ऑल्सो। कैसे? अगर हम बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं, ये यहाँ से होगिंग बेंडिंग मोमेंट आएगा 0.75 और ये 0.25, सो बेसिकली 10 into दिस इज 0.25, सो इट इज 2.5। ये यहाँ पे 2.5 आ गया। ठीक है, 10 किलो न्यूटन का। 10 into 0.25, ठीक है, तो 2.5 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, ये क्लॉकवाइज उधर भी क्लॉकवाइज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ उधर चला जाएगा, 1.25। ठीक है, ये 1.25 हो जाएगा, ये इसका बीएमडी बन गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ यूज द सिमिलर ट्रायंगल एंड कैलकुलेट इट। ये तुम सिमिलर ट्रायंगल यूज करके और कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे ये तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कितना है, लेट अस से अगर ये x है तो ये तुम्हारा 0.75 माइनस एक्स बच जाएगा। तो 1.25 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 0.75 माइनस एक्स। सॉल्व दिस एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, next problem number 34. Next problem number 34. Now, tapered circular rod of diameter varying from 20 mm to 10 mm is connected to another uniform circular rod of diameter 10 mm as shown in the figure. Both bars are made of material same modulus of elasticity when subjected to a load of this, the deflection at point A. देखो,
हमें डिफ्लेक्शन यहाँ पे बताना है पॉइंट ए पे, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन. नाउ दिस डिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस. जैसे हमने एक टेपर्ड रेक्टेंगुलर किया था ना, सेम वे में टेपर्ड सर्कुलर है ये. ठीक है, ये टेपर्ड सर्कुलर है. अगेन यूज द फॉर्मूला. ठीक है, एक फॉर्मूला इसका होगा, एक फॉर्मूला इसका होगा, एंड देन कंबाइन बोथ ऑफ देम एंड यू विल गेट द डिफ्लेक्शन. ओवरऑल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा तुम्हें कितना इसका आ रहा है. ये टेपर्ड सर्कुलर वाला आई गेस 2-3 बार आ चुका है अभी तक गेट में, 2 बार आई गेस. बट ईएस में इट इज बीइंग आस्क्ड फ्रिक्वेंटली. आईएएस में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन. मे बी मोर देन 10-20 टाइम्स अभी तक क्वेश्चन आ चुका है आईएएस में. गेट में 1 या 2 बार आया. बट जैसे हमने रेक्टेंगुलर का याद किया था ना, सेम वे में यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, इसका भी डेरिवेशन वैसे ही होता है पी की डेल्टा इक्वल्स टू पी एल बाई ए करके. ठीक है, and then you have to integrate it, but at the end of the day you have to remember the formula. Next question. 3 meter long simply supported beam of uniform cross section. It is disconnected. 1 second. One second, there is some problem. Meanwhile, if you have any doubt, you please put it in the chat. I'll just reconnect this. I'll just reshare my screen. Yeah. 3 meter long simply supported beam of uniform cross section is subjected to UDL of 20 kilonewton per meter in the central 1 meter as shown in the figure. So again, it is a symmetric. If the flexibility of this is a maximum slope expressed in the radians of the deformed beam. ठीक है, देखो इसको अगर तुम्हें निकालना है, सो व्हाट यू कैन डू, बेसिकली देर आर 2 ways ऑफ सॉल्विंग दिस. ठीक है, या तो तुम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दो. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के कर सकते हो, और अदरवाइज स्टैंडर्ड मेथड से कर सकते हो जो हमारे स्टैंडर्ड, बट दैट इज गोइंग टू बी बिट लेंथी. तुम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओ एंड देन टेक द हाफ ऑफ द बीम ओनली. ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड है, ये सिंपली सपोर्टेड है. यहाँ पर ऐसे ये एक बार फुल डाउनवर्ड ले लो. ठीक है, उसके बाद एंड देन यू सब्ट्रैक्ट दिस मच. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देन दिस बिकम्स इजी. और अगर ये नहीं करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी जाएगा, यू बेटर यूज द कॉन्जुगेट बीम मेथड. ठीक है, सिंपली सपोर्टेड विल रिमेन सिंपली सपोर्टेड. इसका बेंडिंग में डायग्राम बनाओगे. बेंडिंग में डायग्राम कैसा बनेगा इसका, यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा, देन इट इज गोइंग टू गो स्ट्रेट, ये ऐसे, फिर पैराबोला जाएगा, फिर पैराबोलिक ऑलमोस्ट, जस्ट का वो चेक करना पड़ेगा. एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू सी लुक लाइक. ठीक है, ये रिएक्शन कितना आ जाएगा, जैसे 20 × 1 मीटर दिया है, सो दैट इज 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10. ठीक है, ये सिमेट्री होने की वजह से. और फिर ये वैल्यू तुमको 10 मिल जाएगा. ठीक है, 10 × 1 से 10 मिल जाएगा. और ये वैल्यू तुमको कितना मिल जाएगा, 10 × 1.5 माइनस 20 × 0.5 डिस्टेंस इंटू 0.5/2. ठीक है, ये तुम्हें यहाँ का डिस्टेंस मिल जाएगा. देन इट विल बी इजी. एक बार बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया, देन यू कैन कैलकुलेट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. इसने पूछा है मैक्सिमम स्लोप पूछा है, सो स्लोप मैक्सिमम किधर आने वाला है तुमको, यहाँ पर आएगा कॉर्नर पे. दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम स्लोप. सेंटर पे तो 0 ही आएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, a guided support as shown in the figure below is represented by the 3 spring. Horizontal है, vertical है, rotational है.
with the stiffness kx, ky, k theta. The limiting value of kx, ky, k theta, guided support as shown in the figure. ठीक है, थ्री स्प्रिंग्स, हॉरिजॉन्टल इज के एक्स, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस के एक्स है, के क्या होता है, के इज नथिंग बट द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर बी इनफाइनाइट फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पुल नहीं होगा। तो पहला तो इनफाइनाइट आ जाएगा। दूसरा, वाई डायरेक्शन में, वाई इज वर्टिकल, what is the force required in the vertical direction to displace it by unit displacement? So as there is no restriction, तो जीरो फोर्स चाहिए, बिना फोर्स के वो यूनिट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। थर्ड इज रोटेशनल, अगेन इट इज इनफाइनाइट। so where is the answer? Infinite, zero, infinite, infinite, zero, infinite. A is going to be the answer. ठीक है। Okay, so now almost again the questions are similar. If you have doubt, you can probably ask. Okay, I have taken how many questions so far? 36 plus 20 was there, so almost 56 questions are completed, and then rest. Hmm. If you have any doubt, you can please ask. So I hope there are no questions. Okay. Still the screen is getting updated. If there are no questions, then I'll just quit the session. I'll just wait for 1 or 2 minutes. If there are no questions, then I'll end the session. So all the best, guys. Thank you for your thank you for listening, and thank you if at all some interruptions were there, but still you have shown the patience. Thank you. All the best.